49 हमने किया नहीं था, राइट? सो कहाँ पे गया 49? राइट। तो ये जो चीज़ है, मैंने सर्च किया कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एंड टर्न्स आउट कि ये तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, या जस्ट नहीं कर सकते हो। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पहले एएमजी में इक्वालिटी लगाए और उसके बाद में जो अपने को एक्सपोनेंट मिलेगा उसको अपन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें ऑफ कोर्स। बट वो पूरी तरह से गलत है, बिकॉज तुम जब एएमजीएम लगाते हो तो तुम एक ऑब्वियस उसमें एक कंडीशन रहती है कि इक्वालिटी तभी होगी जब जो तुम्हारे टर्म्स है वो इक्वल हो जाए, और वो होगा नहीं अगर तुम इनफैक्ट मतलब उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करोगे। जब वो मिनिमाइज वाली कंडीशन आएगी तब जो साइन और कोसाइन की वैल्यू मिलती है, दोज वोंट वर्क। उससे तुम्हारे जो टर्म्स है एएमजीएम के वो इक्वल नहीं हो रहे, एंड दैट मीन्स इट्स जस्ट रियली बैड। ये एक्सपेक्ट करते कि अपन 1/8 स्क्वायर रूट ऑफ 1/8 आंसर लाए, एंड दैट वुड बी द मिनिमम वैल्यू। बट इन रियलिटी मिनिमम वैल्यू वो नहीं रहेगी, उससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज इनफैक्ट वो 1/8 स्क्वायर रूट ऑफ 1/8 कभी भी टच नहीं कर सकता ये वाला एक्सप्रेशन। सो 49 इन लोगों का गलत ही है, या जस्ट गलत है इनका। 53, सो हाँ ये चीज़ मैंने वापस एक बार ट्राई की, टर्न्स आउट कि मुझे जो मिल रहा था वो सही था बिल्कुल, कि जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस विद एक्स, राइट? सो आई रिमेंबर अपने को मिला था कोसाइंस 2 वगैरह कांस्टेंट्स थे उसमें सामने, आई रिमेंबर दैट 1 - 3 साइन स्क्वायर टाइम्स सम कांस्टेंट, आई थिंक इट वाज 2 और व्हाटएवर। सो द थिंग इज कि जब तुम कोसाइन को जीरो पुट कर देते हो एट दैट पॉइंट ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाना चाहिए, विच इज ऑब्वियस बिकॉज ये क्या है, जस्ट 2 1 1 1। तुम कोसाइन को जीरो पुट करोगे इट्स जस्ट 1 1 0 0 0 एंड 1। तो हाँ ये और ये एडिशन करके तुम्हें जस्ट ये मिल जाएगा, दैट्स वाई ये पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। बट इन केस तुमने ये जीरो नहीं पुट किया, लेट्स से तुमने कोसाइन को 1 पुट कर दिया, देन साइन विल बी जीरो, राइट? तो ये हो जाएगा 1 -3 यानी कि -2, और वो चीज़ जीरो नहीं होगी। सो अगर मैं कोसाइन को 1 पुट करता हूँ, साइन को 0 पुट करता हूँ, देन दिस विल बी, सो 2 बाहर निकल रहा हूँ, 1 1 1 1। सो अब साइन 0 है, कोसाइन 1 है, सो 1 1 एंड देन दैट्स 0, राइट? अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, सो 1 या फिर पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, 0 0 1 1 0 -1 एंड देन 1 1 0, या तो मैं ये यूज करके इसको भी जीरो कर सकता हूँ, और फिर मैं ये यूज करके इसको जीरो कर सकता हूँ, एंड दैट मींस ओके ये तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा हो गया है, राइट? तो अगर मैं इसको दो शिफ्ट्स करता हूँ, दैट मीन्स बेसिकली अपन इसको साइकिल कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट? 0 1 0 0 0 1। तो हाँ ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है दैट विल जस्ट बी इक्वल टू 1, एंड अपने को फिर आंसर 2 मिल जाएगा। दैट्स वियर्ड, अपने को 2 नहीं मिलना चाहिए था, अपने को मिलना चाहिए था, अच्छा अपने साइन को 0 पुट किया, राइट? राइट, कोसाइन को 1 पुट किया, साइन को 0 पुट किया, तो 1 - 3 नहीं, जस्ट 1, एंड दैट्स व्हाई यस 2 इज द आंसर। सो तो ये जो पूरी चीज है इट मेक्स नो सेंस, ये कांस्टेंट नहीं है कोई, सो यू जस्ट कैन नॉट डू दिस, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर R1 है देन या क्लियरली ये चीज काम नहीं करेगी। तुम इसका स्क्वायर ले लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें वो नहीं मिलेगा वैसा, ठीक है? सो 53 भी उनका गलत है, अपना नहीं है। और राइट 57 जो था, आई थिंक हम वहां पे अटक गए थे। सो 57 का मैंने पूरा वीडियो क्रिएट किया है, तुम वो देख लो, एंड बिकॉज ए ई जो है वो ए ई स्क्वायर से बड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली सिर्फ एक ही नॉर्मल रहेगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो एक्स एक्सिस सिर्फ वही नॉर्मल रहेगा। दैट मीन्स कि अपना जो इलिप्स है क्या क्या है इसका डायमेंशन, तो इसका ए जो है दैट इज 5 and b is 4, right? This is 5, this is yeah, so AE that will just be 3 and this is 5, so this should be 2। तो ये अपना रेडियस हो जाएगा बिकॉज सर्कल विल बी लाइक दिस, सिर्फ एक ही जगह पे टच करता है, दैट इज एट दिस पॉइंट। सो लेट्स सेट रेडियस इज इक्वल टू 2, हाँ? सो या फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट्स गोना बी 2, सो 57 का 2। ओके कूल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थोड़ा सा इसको ओके
तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस थे वो अपन कर चुके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको मतलब इस चीज को मैं लास्ट वीडियो रखूंगा ये इतने वीक के लिए, बिकॉज मुझे एरोडो भी स्टार्ट करना है, राइट। वो मैंने बहुत दिनों से पेंडिंग पे रखा है, बट करूँगा मैं स्टार्ट ये पूरा खत्म होने के बाद, मतलब पूरा है ने ये वीडियो खत्म होने के बाद। फाइन, सो लेट्स गो टू 58। 58 है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी प्लेइंग अ गेम, कॉइन इज फ्लिप, ठीक है, कॉइन का गेम है। इफ इट शोज हेड ए गेट्स अ पॉइंट, इफ इट शोज टेल then B gets a point. The one who gets 20 points first wins 8 silver coins. At a point A is leading B with 15. Okay. तो A के 14 points है, B के 10 points हो चुके हैं, जब भी हेड होगा तो A को point मिलता है, अदरवाइज B को point मिलता है, राइट। तो इवेंचुअली कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के बाद में ये गेम खत्म होनी चाहिए। सो ये ऐसा नहीं होगा कि इन्फिनिटली लॉन्ग चलने वाला है, राइट। सो कितने टर्न्स के बाद में खत्म हो सकता है, एट मैक्स कितने इसमें टर्न्स लगेंगे। एट मैक्स लेट्स से बी जीतने वाला है, तो बी जीतने के लिए यू विल नीड 10 मोर पॉइंट्स बी को, राइट। तो एटलीस्ट 10 टर्न्स तो लगेगा उस टाइप से, बट ए के तुम 0 से लेकर 5 तक तुम पॉइंट्स रख सकते हो। सो तुम 5 तक मतलब अगर ए को 5 पॉइंट मिल गए और बी को लेट्स से अभी तक 9 पॉइंट्स ही मिले, सो इट्स एट 19 to 19। और फिर अगर बी को एक और पॉइंट मिलता है देन बी विंस, राइट। सो यानी कि 5 प्लस 10 तुम्हारे एटलीस्ट 15 टर्न्स, सॉरी एट मैक्स 15 टर्न्स हो सकता है। और फिर ऑफकोर्स जो ए का रहेगा, ए के जीतने के लिए यू विल जस्ट नीड 6। अच्छा ठीक है, तो ए के जीतने के लिए 6 + 9 स्टिल 15, राइट। या सो एनी केस अपने को बताया कि इन 15 फ्लिप्स ये गेम टर्मिनेट होने ही वाला है, राइट। सो लेट्स डू केस। अपने को चाहिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स शुड बी गिवन टू बी इन अ वेट व्हाट, तुम प्रोबेबिलिटी ढूंढ ही नहीं रहे हो, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया फिर। इन अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सो मैंने पहले कभी से क्वेश्चन देखा नहीं है, इसको रिलेट करते हैं कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज ये उसी टाइप का लग रहा है, एटलीस्ट इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन तो उस टाइप का ही है। अच्छा तो शायद से फेयर, ओके आई अंडरस्टैंड। तो अगर तुम गेम बीच में स्टॉप कर डालते हो, राइट, मतलब 14 10 ने स्टॉप कर दिया, तो बी को तुम कितने पॉइंट्स दोगे, बी को तुम कितने कॉइन्स दोगे और ए को कितने दोगे, राइट। हाँ हाँ हाँ, coins should be given to be in a fair distribution. Wait, what? I don't understand this. Number of coins that should be given to B in a fair cons. अच्छा. The one who gets 20 points wins and he gets 8 silver coins. ठीक है, तो वहां से coins की बात आई है। तो fair distribution यानी कि अगर अपन ने वो गेम आगे बढ़ने दिया होता तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी रहती कि बी जीत गया, उतनी प्रोबेबिलिटी टाइम्स 8 सिल्वर कॉइन, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, बी को जितनी कॉइन्स मिलने वाले उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट, उतना अपने को देना पड़ेगा बी को प्रोबेबली, क्योंकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक दैट वुड मेक सेंस। तो फिर अपने को बेसिकली प्रोबेबिलिटी देखनी है बी के जीतने की, राइट। सो लेट्स गो विद इट। तो अगर बी को जीतना है देन अपने को 10 पॉइंट बी को देने पड़ेंगे, दैट इज अपने को 10 टेल्स लगने वाले। एंड द सेम थिंग तुम्हें और क्या कर सकता है तुम्हें, अच्छा अपने को समथिंग लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक या दैट लुक्स वेरी मच लाइक इट, क्योंकि 10 पॉइंट्स बी के लिए और लेट्स से वी स्टार्ट ऑफ एट 5 पॉइंट्स ए के लिए, तो फिर 10 + 5 15 सी 10, and that time is 1/2 की पावर, तो 15, राइट, बिकॉज 15 था तो एग्जैक्टली ये प्रोबेबिलिटी है कि
ये वाला पर्टिकुलर केस हो कि अपने पास में 10 पॉइंट्स, मतलब कि जो नेक्स्ट 15 प्रोसेस रहेगी उसमें 10 पॉइंट्स बी को मिल जाए और 5 पॉइंट्स ए को मिल जाए, राइट? ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। सो इट इज प्रोबेबिलिटी, एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी बेसिकली, मतलब कि जो सारे केसेस होने वाले हैं सब केसेस में ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि तुम्हारा हर कॉइन टॉस में हाफ प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर आउटकम होने की, राइट? तो एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2 to the power of 15, बट ऐसे 15 से 10 आउटकम्स है जो कि सारे के सारे सेम ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, फिर अपन नेक्स्ट कर सकते हैं कि लेट्स से 10 पॉइंट्स मिलते हैं बी को और इसको 5 नहीं, इसको 4 मिलते हैं, देन दिस वुड बी, या सो 9 प्लस, सॉरी 10 + 4 14, एंड देन सी 10 वंस अगेन, क्योंकि या देन 1/2 to the power of 14 ना, क्योंकि अब 4 टॉसेस होने वाले एंड सो ऑन। तो कब तक करना है अपने को ये? आई थिंक ये 10 पे टर्मिनेट होने वाला है वैसे भी, सो टिल 10 सी 10 half power 10 something like that. That's the probability of B winning probably. Looks good. हाँ यार, सही तो लग रहा है। सो अपने को सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अब। हाउ हार्ड कैन दैट बी? तो ओके, दिस इज एक्चुअली वेरी हार्ड बिकॉज गोइंग टिल 10 सी, सो 10 सी 10 से अपन जा रहे हैं 15 सी 10। दिस इज नॉट, ओह गॉड। अच्छा, इसका कोई अच्छा फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट? सो वी जस्ट हैव टू डू लाइक, सो एक काम करते हैं ना, 1/2 power 15 कॉमन ले लेते हैं, जस्ट 1/2 power 15 to 15 सी 10 into 2 power 5, so no, just 2 power 0, and then 14 c 10, and then 2 power 1 plus 13 c 10, 2 power 2 and so on, right? क्या आपने को एक्चुअली में सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज 15 c 10 ये ऐसी चीजें मुझे कैलकुलेट करने की इच्छा नहीं है। maybe you can just kind of split this, so yeah, that might work. सो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है 2, मतलब ये 2 से बढ़ते जा रहा है, सो अपने को इन दी एंड मिलेगा 10 सी 10 2 पावर 5, राइट? सो आई एम थिंकिंग 2 पावर 5 को मैं 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 में स्प्लिट कर सकता हूँ, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली 11 सी 10 2 पावर 4 रहेगा ही। सो अगर मैंने इसे स्प्लिट किया, देन दिस विल बी 11 सी 10 प्लस 10 सी 10 इंटू 2 पावर 4 प्लस 10 सी 10 इंटू 2 पावर 4 तो रहेगा ही, एंड so yeah, 11 c 10 plus 10 c 10, उसका क्या कर सकते हैं अपन, राइट? तो we can write that differently. Oh no, okay, this won't work, मैंने सोचा कि मैं वो पाइथागोरस आइडेंटिटी, पास्कल्स आइडेंटिटी यूज करके लिख पाऊँ कुछ भी, बट नहीं यार, तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बिकॉज just the way it is। ठीक है, so 1/2 power 15, let's do it। 15 c 10 calculate करते हैं। 15 c 10 is just basically 15 c 5, and that's just 15 into 14 into 13 into 12 into 11 upon 5 equals like 5 into 4 into 3 into 2। This is just not good। That is, so let's see, 5 3 ये गया 4, so we can write this as 3। Okay, 2, so it's like 7, so 7 into 13 into 3 into 11 लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए इसको, so that is 15 c 10। I mean अपने को आंसर मिल गया, बट यार इसका कैलकुलेशन और ज्यादा हैवी है। सो यू नो अपने पास में इनफैक्ट एक, या वेट अ सेकंड, Fibonacci numbers, maybe just Fibonacci numbers, so we can write this as 15 c 5। so सिर्फ अपन अगर ये 2 पावर वगैरह नहीं होता इसमें, तब क्या होता, अपन उसकी बात करें। 15 c 5 plus 14 c 4 so on till you eventually get 10 c 0। I'm thinking कि ये somehow Fibonacci number से related है, because या मतलब ऐसा अपन ने पहले एक बार देखा हुआ है, राइट? मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि अपन ने क्या किया था। आई थिंक इट वाज स्टिल, या मतलब बस चलते जाओ till you get n c n मतलब something like that, right?
यहाँ पे होगा जो अगला चीज है 14C4 ऑल द वे टू 10C4 व्हाट 10C0 so I'm thinking कि 15C5 you can write that as so तुम या तो मुझे चूज करो या फिर मत करो तुम चूज करते हो तो बेसिकली तो मैं 5 लोगों में से अब सिर्फ कैसे था वो NCR इज इक्वल टू NC सॉरी N-1C क्योंकि अब तुमने एक इंसान को नहीं चूज किया है राइट तो उसको नहीं चूज करना है तो अगर तुम चूज कर चुके हो उसको ऑलरेडी तो तुम चूज कर चुके हो अब तुम्हें सिर्फ और R-1 लोग चूज कर दें अगर तुम उसको नहीं चूज करते हो तो अभी भी तुम्हें R लोग चूज करें बट तो N-1 लोग बचे सो N-1CR राइट दैट्स पास्कल्स थ्योरम और व्हाटएवर पैसेज आइडेंटिटी सो अगर मैं इसको 15C5 अप्लाई करूँ 15C5 इज इक्वल टू 14C4 प्लस 14C5 oh 14C5 that is not nice seriously 14C5 huh oh and then 14C5 को अपन change this is just not nice I know like ये कोई टाइप का recursion follow करना चाहिए and that should be working डोंट थिंक कोई और तरीका अपने कैलकुलेट ही करना पड़ेगा सब 15C10 कर चुके हैं कितने 15 14 13 12 11 10 तो ये तो बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा 14C10 दैट इज so नीचे 4 फैक्टर हो जाएगा राइट सो जस्ट 15 अपॉन 5 वाली जो वैल्यू है मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ पे नहीं रहेगा दैट जस्ट मींस 7 into 13 into 11 होपफुली yeah exactly मतलब इसमें 4 नंबर्स आए तो लाइक 14 into 13 into 12 into 11 राइट पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा 15 करा था और डिवाइड करेंगे अपन 4 फैक्टोरियल से सो वो 5 कम है 5 फैक्टोरियल से दैट्स व्हाई 15 अपॉन 4 साइड में निकाल लो तो यस जो एक्स्ट्रा 3 आ रहा था 15C10 में वो नहीं आएगा सिमिलरली 13C10 में जो 14 अपॉन 4 था विच इज लाइक 7 अपॉन 2 जो एक एक्स्ट्रा था वो नहीं अजीब है ये बट यस 13C10 में वो नहीं आ रहा होगा सो यार इतना भी होना 13 into 12 into 11 अपॉन 2 into 1 so basically 13 into 6 into 11 that's 13 into 3 into 11 2 wait what no sorry 13 into 2 into 11 right yeah so 13 into 11 और यहाँ पे 2 आ जाएगा oh ये अच्छा तरीका है और फिर क्या 10C सॉरी 11 12 12C10 इतना मुश्किल नहीं होगा so just 12 into 11 upon 2 so it's just 6 into 11 basically so it is I think that's correct 6 into 11 or finally you just get 11C10 which is just 11 and then 10C10 which is 1 okay अब अपने को क्या करना है ये चीज और फिर ये चीज टाइम्स 2 एंड फिर ये चीज टाइम्स 2 स्क्वायर एंड सो ऑन नहीं यार ठीक है सो इसमें से मैं 7 13 11 कॉमन डिस्क जस्ट 3 plus 2 बेसिकली सो इट विल बी 5 into तो ये प्लस वो हाँ तो ये हो जाएगा 5 into 13 into 7 into 11 राइट ओके cool फिर अब नेक्स्ट वाला ये रहेगा फिर मैं 2 पावर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूँ लाइक 4 से तो ये हो जाएगा 8 into 13 into 11 तो 13 into 11 कॉमन है 13 into 11 सॉरी 11 और यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 8 ये तो अपन क्यों कर रहे हैं इस टाइप से 13 into 11 into 47 और whatever so no this is just really bad ये करना पागलपन है राइट कम टू द कंक्लूजन कि ये करना पागलपन होगा और फिर ये चीज अपॉन 2 पावर 15 एंड व्हाटएवर क्या करना है अपने को सर हाँ उसको अपन को वैसे 20 से मल्टीप्लाई करना है बाय द वे व्हाट इज दिस कोई अच्छा तरीका नहीं है कहीं करने का आई नो अब अपने को आंसर तो मिल गया यार बट ये आंसर बहुत ही घटिया सा है
कुछ तो भी करो यार, इसको कैलकुलेट करो, अच्छी चीज है। 10 and what not, just really bad. ऐसे अगर अपन करते जाएंगे तो फिर तो रात हो जाएगी, बिकॉज ये या बहुत घटिया सर। ठीक है, तो अपने ये कर लिया है, तो अभी तक अपन ने ये चीज और ये चीज कर चुके हैं, और फिर नेक्स्ट अपने को ये इस चीज को 8 से मल्टीप्लाई, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर, ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो 11 इंटू 48 बेसिकली, सो ये प्लस 11 इंटू 48, ओके फाइन, एंड देन प्लस 11 इंटू, सो यहाँ पे 2 पावर 4 हो जाएगा आई थिंक, एंड दैट्स जस्ट 16, isn't that right? I think so. Yes. And finally just 32. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, सो 11 इंटू 60, नो वेट व्हाट, 11 इंटू 64, बिकॉज या ये चीज ये होगी, ओके नाइस, सो ये कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा, राइट? I don't like this. Don't like this at all. यहाँ पे 11 है, ये 47 कहाँ से आ रहा है इसमें, गंदी सी कुछ, ठीक है ये ऑड है, बाकी सब इवन है, आई गेट दैट, तो ये ऑड होगा, यस करेक्ट, बट दैट्स इट, सीरियसली इसके आगे कुछ नहीं। ओ अपने को ये भी करना है, वी विल डू टू, यहाँ पे 30 आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है आई गेट इट, बट दिस इज नॉट, ये इंटीजर जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे, oh sorry, अपने को 8 से मल्टीप्लाई करना था, then this would just be, yeah, 2 power 12 आ जाएगा यहाँ पे, this is the probability of the winning, right? तो वो times 20, that should give us the expected value I think. बट ये तो कोई टाइप का इंटीजर नहीं है, बिकॉज ये ऑड नंबर है अपॉन 2 पावर समथिंग, सो दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो क्यू क्या हो रहा है इसमें गलत? We start off at 5 plus 10 और फिर oh, why is this supposed to be 15? Actually yes, it's supposed to be 15 because yes it's supposed to be 15, ठीक है वो सब सही है, getting is kind of weird number, क्या गलत कर रहा हूँ यार? ठीक है, आई मीन अपने को आंसर तो मिल गया, बट इसको कैलकुलेट करने का मुझे समझ रहा है कि ये एक बहुत ही गंदी वैल्यू है, एंड वो इंटीजर तो नहीं है किसी भी तरह से, सो इट्स नॉट डूएबल, इसके आगे अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको बाद में सर्च करूंगा, देखूंगा कि क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है कि क्या है, सो जस्ट नॉट डू इट फॉर नाउ। सो या 59, the least positive integral value of the parameter a for which this function increases and has no critical points for all x belonging to real is, तो ये फंक्शन अपने को इंक्रीज करवाना है, इट शुड हैव नो क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल, तो when do we have a critical point? What do you mean by critical point? You mean ऐसा पॉइंट, तुम एक्सट्रीमम पॉइंट्स की बात करो जहाँ पे तुम्हारा एफ डैश 0 होता है, ऐसा कुछ? क्योंकि इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो या फिर वो जंप कर रहा ऐसा कुछ हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो मे बी वो क्रिटिकल पॉइंट्स का सिर्फ इतना मतलब है कि डेरिवेटिव शुड इक्वल टू 0 वॉट एवर। 8a x यहाँ पे पूछना, 8a मेरा 7 माइनस 6a cosine of 6x, right? Then minus 5 cosine of 5x, that should be equal to 0. So basically 8a minus 7 is equal to 6a cosine of 6x,
plus 5 cosine of 5x. एंड यू वांट टू फिगर आउट कि कौन से ए की वैल्यूज के लिए इस चीज से कोई सॉल्यूशंस नहीं होते. सो 6x and 5x, that's what is this, right? इसको कैसे करूँगा मैं? मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब अगर ये जो चीज़ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो या फिर मिनिमम वैल्यू से छोटा हो, देन वी आर डन, राइट? बट व्हाट इज दिस गाइस मैक्सिमम वैल्यू? तो उसके लिए इसका अपन डेरिवेटिव इसको इसको g बोलो, so it's just equal to g of x, and what we want is कि g dash of x should be equal to 0. That just means okay, 36a sine of 6x plus 25 sine of 5x should be equal to 0. ऐसा एक नंबर ढूंढ के बताओ. x equal to 0, right? तो x equal to 0 is one thing that works. Anything else? इसको अदरवाइज सॉल्व करना पागलपन होगा, राइट? इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये जो चीज है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इट्स गुड एंड ऑल, बट एक्चुअली में पूरा नेगेटिव में आने वाला है. तो जो इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ समथिंग, जिसमें कोसाइन ऑफ 6x वगैरह आने वाला है. सो या जब x इक्वल टू 0 रहेगा दैट ऑल ऑफ दैट विल प्रोबेबली बी पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है तो, राइट? Oh wait, so a is an integer. Okay, मैंने वो नहीं देखा. a should be an integer. Oh, तो फिर अपन सिर्फ इसमें वैल्यूज डालना शुरू कर सकते हैं, राइट? तो we know that this complete thing is just bigger than or equal to. Okay, you know what? इतना अच्छा तो अपन a के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्टली. So this will be a into 8 minus 6 cosine of 6x is equal to 7 plus 5 cosine of 5x. So a is just 7 plus 5 cosine of 5x upon 8 minus 6 cosine of 6x, something like this. तो अब अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू चेक करनी है फॉर दिस फंक्शन. सीरियसली does it even make any sense? Like इसका डेरिवेटिव टाइम्स ये इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव टाइम्स ये, राइट? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 25 साइन ऑफ नेगेटिव में आएगा ऑफ कोर्स, एंड देन ये सारी चीज. तो 8 माइनस उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, उसमें स्ट्रोक ऑफ एफ जान दो. 8 माइनस 6 इसलिए सो 6 कोसाइन ऑफ 6x दैट शुड बी इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव व्हिच इज जस्ट positive 36 of sine 6x, and that times this whole thing, so 7 plus 5 cosine of 5x, that should be happening. So let me guess, x equal to 0, right? That definitely works. So x equal to 0 would be one extremum value. Anything else? X equal to pi, yeah, that works. If at x equal to जिसमें तुम्हें ये चीज इंटीग्रल मैट्रिक्स ऑफ pi मिल जाए, that will work. Yes. So पाए वगैरह काम कर सकता है इसमें और नहीं काम कर सकता है. अच्छा, ये जब 0 हो जाएंगे, मतलब इन दैट केस दैट माइट आल्सो वर्क. कि नहीं 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 वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इट्स नॉट वर्थ डूइंग. सो या कोसाइन ऑफ 5x और कोसाइन ऑफ 6x, या तो कोसाइन ऑफ 6x तो वैसे भी 0, मतलब वो 1 ही होने वाला है एनी केस जब तक sin x 0 है. then that means this just can be written as 2, और ये चीज प्लस माइनस 1 होगी. तो अगर 7 plus 5.2 यानी just 12.2 यानी कि 6 हो जाएगा. तो a should be bigger than 6 or it should be less than 1. Oh sorry, it should, yeah, less than 1 because 7 minus 5.2. so I'm guessing कि अगर a 6 से बड़ा रहा है फिर 1 से छोटा रहा, then it works, right? So it should have no critical point for all its belonging to real. Yeah. अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है और उसको अपने को इतना कॉम्प्लिकेशन. व्हाई एक्सपोन? क्यों ना मैं इसको ऑयलर्स थ्योरम यूज करके लिखूं और फिर शायद से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा.
राइट, या सीम्स लाइक दैट, क्योंकि फिर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से जाएगा पूरा। और so least possible value of a, right? Well, I'm thinking it could be, well, अगर वन से छोटा चाहिए then it should be zero or something, but अपने को positive integral values चाहिए, and that means it should be bigger than 6, so 7 probably. जब 7 रहेगा तब क्या होता है, right? So this could be 7, I think. so यहाँ पे क्या था वैसे, हाँ ये था ना, 7 is probably something that will work. Yeah, I really want to get rid of this thing तो स्टिल अब मुझे पता नहीं इसमें और क्या मैं कर सकता हूँ जिससे मुझे और स्ट्रिक्ट कुछ तो मिल जाए, बट आई जस्ट से 7, राइट? 7 इज गोइंग टू वर्क। 9 का 7, ठीक है। 60, मुझे बताइए क्या करने को सोच कि हमें क्या करना चाहिए इसमें, वी हैव नो आइडिया राइट नाउ। ओ वेट, डिड दे से इट इंक्रीजेस, मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वेट, तो गो बैक, अपने को जो डेरिवेटिव मिला था दैट वाज दिस थिंग, राइट? सो दिस शुड ऑलवेज बी बिगर देन 0 no matter what value of x. Oh, so अपन ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। Okay, I get it. So in fact ये, yeah, so first of all 8 minus 6, thankfully 8 minus 6 cosine of 6x is always positive anyway, and similarly 7 plus 5 cosine of 5 is always positive anyway. तो yeah, ये equal to नहीं, इसको bigger than or equal to रखो, cause exactly वो उधर जाएगा, and oh, so it's like a into 8 minus, हाँ तो exactly वही हुआ ना इसमें भी। Yes, so a is bigger than this thing, right? That's what they are saying. तो हाँ ना, करेक्ट तो है, करेक्ट तो है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन ने 7 ढूंढी, इवन दो मुझे पता नहीं एक्चुअली कैसी है, मे बी 7। तो 7 पे yes it kind of works. What's the problem with that, huh? No critical point, you say. ठीक है, so it's gonna put in 7. We'll see if it's correct or not. Let's go to 60. 60 is if Sn is equal to this thing, so nc0, nc1, nc1, nc2, okay, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, nc0, ncn minus 1, फिर nc1, ncn minus 2, so look, 0 plus n minus 1 is n minus 1, this thing is also n minus 1, तो हम basically 2n से n minus 1 लोगों को choose करो, right? So in the end 2, nc n minus 1, nc0, so in the end as well, basically वही हो गया ना कि तुमने 2n के ग्रुप को n और n के दो ग्रुप में ब्रेक किया और फिर तो उससे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले रहे हो कि कैसे कैसे मैं चूज कर सकता हूँ n minus 1 लोगों को। Yeah, that's it. So this whole thing is just like Sn is just 2nc minus 1. Okay, and if Sn plus 1 upon Sn, so ठीक है 2nc n minus 1 upon, so Sn plus 1, right? It should be 2n plus 2. क्या हो रहा है इसको, 2n plus 2, I'm thinking इसको कुछ तो भी अलग क्लास में लिख सकता हूँ, whatever. So 2nc, so sorry, 2n plus 2 c n minus 1 plus 1, so basically n upon 2nc n minus 1. If this quantity is equal to 15 upon 4, right, then the sum of two possible values of n is, come on, seriously, ठीक है करते सॉल्व इसको। So 2n plus 2cn, that will be, तो n इसमें रहेगी चीजें, isn't that right? Oh, and 2n, okay, इसमें n plus 1 हो जाएगा, unfortunately that's not good। यहाँ पे n plus 2 हो रहा है और यहाँ पे n plus 1 हो रहा है, okay, this is not nice। Fine, so 2n into 2n minus 1 all the way to, इसमें n चाहिए अपने को, so अगर we are starting off at 0 तो लास्ट में अपने को minus n minus 1 रखना पड़ेगा, and that just means n plus 1 तक अपने को रखना है, right?
Yeah, and all of that upon, well, basically n factorial, and all of that upon. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n into 2n minus 1 up till when? So n minus 1 चाहिए अपने को, and that means 0 to n minus 2 जाना पड़ेगा अपने को. Isn't that right? तो अगर मैं minus n minus 2 करता हूँ, then this will just be n plus 2. So ये 2 till n जा रहा है, that means exactly n minus 1 terms है. और ये तो ऑब्वियसली कि ये n हो जाएगा सिर्फ, और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट n plus 2. So it's just what, 1 upon n into n plus 2, right? Seems legit, right? Because yeah, you denominator have n plus 2, so it works. It, oh okay, wait, no, sorry, all of this is wrong because n plus 1 is smaller than n plus 2. तो क्या होगा कि यहाँ पे जब n plus 2 रहा होगा, right? into, sorry, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे n plus factorial है whatever, so ये कैंसिल होके n हो जाएगा. That just means n plus 1 upon n. Wait, what? That's not a quadratic in any way. कुछ तो गड़बड़ है. Oh come on, why didn't this work? So it should be n plus 1 upon n, I think, because n minus 1 factorial आएगा वहाँ पे, n over here. अपने को एग्जैक्टली n minus 1 इसमें टर्म्स चाहिए थी, n 2 से n, that is just n minus 1 terms exactly. और यहाँ पे oh, ये 2n plus 2 होना चाहिए था यहाँ पे. Oh okay, so not like this. यहाँ पे अपन 2n plus 2 2n plus 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, and then 2n. तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा, इंस्टेड तुम 2 यूनिट आगे जाओगे, जिस मीन्स n plus 3 पे एंड होगा, राइट? तो 3 से n plus 2, right? That is n, right? So this should be what actually will be there. तो ये नीचे n तो आएगा ही, I get that. और जब n plus 2 is less than n plus 3, so ये पूरा कैंसिल हो जाने वाला है, तो यहाँ पे n plus 2 रहेगा. The thing is कि यहाँ पे जो 2n था वो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, and that means यहाँ पे 2n plus 2 and then 2n plus 1 भी रहेगा, and that all of that is just equal to 15 upon 4. Isn't that what you're saying? और अब तक सिर्फ सम ऑफ रूट्स ढूंढना है, बिकॉज इसके दो जो रूट्स आएंगे उनका एडिशन. उन्होंने कहा कि इसके दो रूट्स आएंगे, राइट? यस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सिंप्लीफाई करते हैं. जस्ट n plus 1 into 2n plus 1, उसको तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना. यस, सो 1 plus 3n plus 2n squared upon n squared plus 2n, that is equal to, तो यहाँ पे नीचे 2 मतलब जैसे 8 हो जाएगा. Yes, so 8 plus 24n plus 16n square is equal to 15n square plus 30n. So n square minus 6n plus 8 is equal to 0. So n minus, yeah, ये तो हो ही गया ना, n is equal to 2 और 4. ट्राई कर लो. हाँ ठीक है ना, ये अगर नॉट डिफाइंड हो रहा तो ये काम कर जाएंगे. दैट मीन्स यस, सम ऑफ द रूट्स इज जस्ट 6. कहाँ पे गया क्वेश्चन अपना? हाँ, सम ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज, तो वो 6 है. 60 का 6, नेक्स्ट 61. Value of this limit. Oh, what is this? Tan of pi upon 2n, tan of 2 pi upon 2n. So 2n डिनोमिनेटर में आ रहा है और फिर ये बेसिकली इंक्रीज हो रहा है. So it's like product till, so r is equal to 1 से n और सारे tan है, तो यहाँ पे tan of n minus 1 pi upon 2n भी आएगा, राइट? Look, उन दोनों का एडिशन क्या होगा? जस्ट pi upon 2. अरे यार बहुत ही बढ़िया, वो सारे cot tan के पेयर्स हो जाएंगे, वो सब कैंसिल होके इंडियन अपने को सिर्फ 1 मिलेगा. Oh, except for tan of n pi upon 2n, because वो inside अपने को tan of pi upon 2 दे रहा है, and that's उसका कोई पेयर नहीं है, जीरो थोड़ी ना है यहाँ पे. So this is like infinity to the power of 1 upon n. Wait, that makes no sense. We tan of pi upon 2 is absolute infinity. It's not even कि वो limiting case में infinity हो जा रहा है. नहीं, it is infinity.
So as n approaches infinity, this, I mean, regardless of the n infinity approach कर रहा है कि नहीं कर रहा है, it does in fact approach infinity anyway, because ये to the power of 1 upon n, it has been approaching infinity for decades. यार ये absolute infinity है, ये कोई limiting case नहीं है जो कि, तो it's like the biggest kind of infinity, you can say that. So I'm pretty sure कि ये जो चीज़ है, this just approaches infinity. But how can that be? ऐसा आंसर तो अपन इनपुट नहीं कर सकते. I think they want us to do कि इसको in terms of a series लिखो. So अगर मैं natural log ले लूँ, so natural log of L, that is basically 1 upon n summation from r is equal to 1 to n basically, and it's just natural log of tan of pi upon 2, so r pi upon 2n, right? So you can just say, okay, pi upon 2 into x, जहाँ पे x is just r upon n. So this is like integration from 0 to 1 of natural log of tan x dx, sorry, tan of pi upon 2x, right? And that's basically natural log of L. So अगर somehow ये जो चीज़ है, this just, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुमने बहुत ही पुअरली डिफाइन किया, बिकॉज अपने को पूरा, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जो लिमिट है जस्ट अप्रोचेस इंफिनिटी, राइट? मतलब ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड वाली चीज तुमने डाल दी, एंड इन केस ये 1 to the power of 1 upon n होता, then this would have made perfect sense कि हाँ, it approaches in fact 1, right? Because it's absolute 1 and that is the power of 1 upon n. But क्योंकि यहाँ पे तुम n यूज कर रहे हो, this is bad. Okay, does this actually change anything? क्योंकि अपने पास में tan of, right यार, अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, yes, and this is still 1 of course. But ये इतना सेंसिटिव है इस सब से, तो how can you just, okay, 0 to 1 tan pi upon 2 is kind of, yeah, it's doable, right? तो अनफॉर्चुनेटली 0 पे वो 0 हो रहा है, so वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है पूरा, एंड आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे कोई इवेल्युएट कर सकता है. इसका कोई मतलब नहीं बनता यार. जब तक एन डिस्क्रीट रहेगा तब तक ये जो पूरी चीज है ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगी एनीवे. अगर तुम एन को ऐसे कंटिन्यूअस कुछ तो भी कर डालते हो, देन हो सकता है एट दैट, मतलब अगर तुम एन को फ्रैक्शन यूज करने लगते हो, एट दैट पॉइंट अपने को पता नहीं कि ये इनफैक्ट कब एंड होने वाला है और एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो फिर शायद तुम ऐसे कुछ कर सकते हो. बट अगर एन इंटीजर है, दैट इज प्रोबेबली वो है इनफैक्ट, then at that point ये जो पूरी चीज है, it just approaches infinity. So what's the big deal? Just infinity, right? ठीक है, ये इंटीग्रल करके देखते हैं, बिकॉज मोस्ट लाइकली वो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी करें, बट आई रियली थिंक ये चीज इनकरेक्ट है, बिकॉज अपने को दो अलग अलग तरह से अलग अलग आंसर्स मिल जाएंगे इस टाइप से, तो अनलेस ये भी अपने को सेम चीज है. सो पहली चीज पाई अपॉन 2x, वी डोंट लाइक इट, राइट? सो विल जस्ट से दिस इज 2 upon pi integration from 0 to pi upon 2 of natural log of tan x and then dx like this. So next हम natural log वगैरह मुझे पसंद नहीं है, so 1 into ये मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, उसको मैं डिफरेंशिएट करूँ, मतलब ये पूरी चीज़ को, राइट? पूरी की पूरी चीज़ को we'll just differentiate that, right? So this will be 2 upon pi. Oh wait, मुझे ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, because as it's going till pi upon 2 मैं वो definite integrals की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ. So just, yeah, it will just be 2 upon pi integration from 0 to pi upon 2 of natural log of cot x, and mind you cot x be positive is, it's well defined and everything, except of course 0 और infinity में पता नहीं क्या हो रहा है. So you can just say, okay, cool, 2i is just 2 upon pi integration from 0 to pi upon 2 of 1. Sorry, wait, what? Tan x times cot x, that would be 0, right? Sorry, that would be 1, yes, and the natural log of that thing, so that will in fact not be 0. So 0 dx. Yeah, तो ये चीज तो अपने कुछ अजीब ही दे रही है. Is equal to I is equal to 0. How can this whole thing be 0? ये होता अगर इसके कुछ टर्म्स तुमने मिस कर देते, बट टर्म्स आउट कि इतना सेंसिटिव है उन टर्म्स पे कि ये ऐसा करना गलत है यार, राइट? सो 61 का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये
इट्स वेरी वियर्ड, तो ये भी बाद में करूँगा. 62 tangents are drawn from this point to this parabola if length of these tangents will intercept on the line x equal to 2. Oh, अच्छा, length these tangents will intercept on the line x equal to 2. अच्छा 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 अच्छा, ओके, इस k then k square is good. ठीक है, समझ रहा हूँ. एक पैराबोला है, तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए इस पॉइंट से इस पैराबोला पे, राइट? तो टेंजेंट्स लेंथ पूछ रहे हैं. ओके, क्या? ओके, नो बिग डील. y squared equal to 4x, that's something like this. Negative 1 comma 2, that is over here or whatever, and x equal to 2, that's here. So basically they are asking कि ये जो लेंथ है, what will that be? All right. But if you figure out कि ये tangents के equation क्या है और इसके इनके y intercepts क्या है, once you are done with the y intercepts, not a big deal, right? Y intercept नहीं होना चाहिए. x equal to 2 पे उनकी y values क्या है? Yeah. So general equation क्या रहेगा? Y is equal, so yt is equal to x plus t square, because in this case a is 1, right? So जब तुम x equal to इसमें क्या 2 पुट कर रहे हो, then at that point y t is equal to 2 plus t square, so y is just 2 upon t plus t, like this. So yes, that is the thing. So अपने को जो ढूंढना है, that height or whatever, that length, that is just equal to 2 upon t1 plus 2 upon t2 plus t1 plus t2 and whatever. अब अपन देखते हैं कि t1 t2 की वजह से intersection point क्या आता है, just y t1. Okay, maybe it's not. Yeah, but in fact अपन directly ढूंढ सकते हैं ना t1 t2 की value. I think so. So yeah, I'll just do that. So y क्या है 2, so 2 times of t is equal to x, which is just negative 1 plus at square, so a तो 1 है, is t square. So basically t square, oh this is weird, minus 2t minus 1 is equal to 0. ठीक है, इसके वैल्यूज आएंगे बट गंदे वैल्यूज आएंगे. तो we can just go around with sum of roots t1 plus t2, that is 2, and then product of roots t1 times t2, that is equal to negative 1. Cool. Oh hey, it's of course, look, x value negative 1 is it's just a focal chord. In fact इसका फोकस क्या है? 1,0. wait, what? Whatever, don't worry about this. ठीक है, so you just need to figure out what this thing is. So 2, and then so t1 we can just write this as negative 2 t2, and then negative 2 t1, and then plus t1 plus t2 and whatever. So negative of t1 plus t2, there we go. That is just negative 2. So in case y intercepts the addition, that's equal to negative 2. Oh, it should be the subtraction of the y, not the addition, yaar. Oof. So मैं इसको y intercept बोल क्यों रहा हूँ अभी तक, क्या पता. So it should be like this. Yes. So we can write this as negative 2t2 plus 2t1 plus t1 minus t2. So basically like 3 times of t1 minus t2. So 3 times the difference of the roots, and what was the 3 square roots. So अपने को वैसे भी magnitude देखना है. It's doable. t1 plus t2 का square, which is 2 squares of 4, and then minus 4 t1 t2. So plus 4. Wow, that's really nice. And that's just equal to 3 square root of 8. Wait, what? Square root 8 कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो interesting. Yeah, very interesting actually. अच्छा, ये k है, then what is, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इस चीज का स्क्वायर. सो बेसिकली तुम बोल रहे हो 9 into 8 72. दैट्स इट, 62 का 72 हो जाएगा. नेक्स्ट 63. if sn is equal to this, then अच्छा ये पिछले बार जैसा ही है. सो oh, but at least इस केस में ये थोड़े अच्छे रिजल्ट. so pi upon 2 cube, pi upon, so ये kind of right, I'm starting to understand क्या हो रहा है यहाँ पे. It's good.
much better than what it was previously. So we just want limit as n tends to infinity of pi q upon Sn. So अगर इसको कुछ अच्छी लिमिट देनी है, then what should happen is that Sn should be a finite thing as n tends to infinity, right? So let's just talk about natural log of Sn. We'll see what that is. So it's just the summation of natural log of, या फिर maybe इसको somehow अपन कुछ और treatment दे सकते हैं, 3 4 till n. This is this is 2 cube over there. Again, and this is 1 minus tan square and then 1 plus tan square. 1 plus tan square is secant square. So नीचे cosine square आ जाएगा. Hey, and cosine square is, oh yeah, so that's how it will be, right? इसकी जनरल टर्म देखते हैं ना. So इसकी जनरल टर्म है 1 minus of tan power 4 pi upon 2 power r, right? That we can write as, so 1 minus tan power 2 pi upon 2 power r, जो भी होता है, then cosine, so 1 upon cosine square, right? और because of that thing is that cosine square को अपन ऐसे लिख सकते हैं, right? 1 minus tan square of pi upon 2 power r plus 1 upon 1 plus tan square of pi upon 2 power r plus 1, and then all of that squared, right? So that might, yeah, that looks good. So my जो अगली टर्म है समा उसमें इवॉल्व हो जा रहा है. Not bad, not bad at all. Okay, it's nice. तो ये somehow अच्छा, जो मुझे समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे. काइंड ऑफ लाइक टेलीस्कोपिंग अप. और फिर ये जो 1 plus tan square है ये somehow, हाँ ठीक है, not bad. So Sn is equal to, I'm just going to write it like 1 minus tan square का product. So minus tan square, sorry, yeah, pi upon 2 power r, and it goes, so ये product जो है that just goes from r equal to 3 to n or whatever. Okay, and that times 1 plus tan square आएगा, but that's just 2 upon cosine square मैंने बोला, right? So divide by 1 minus tan square of pi upon 2 power r, r plus 1, sorry, upon 1 plus tan square pi upon 2 power r plus 1 and whatever. ये 1 plus tan square का केस कभी खत्म होने वाला है क्या? Not sure. So basically just अपने को secant square देगा, right? Yeah, ऐसे तुम cascade करते जाओ and at the end you just get something like that. तो ये चीज का प्रोडक्ट करना है अपने को. And this is of course from 3 to n. तो ये क्या हो जाएगा? Sn is equal to basically 1 plus tan squared of pi upon 2 power r. ठीक है, इसका प्रोडक्ट. अब इसकी बात करते हैं. तो ये जो बाकी की चीज रहेगी इसमें 3 पुट करता हूँ, उसको 1 minus tan, फिर अपन सिर्फ n तक करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या हो रहा है. सो pi upon 2 power r, right? Sorry, 2 power 3. चलते जाओ till you eventually get. एक काम करो ना, इसको ar बोल दो. सो ar is equal to 1 minus tan squared of pi upon 2 power r. तो ये हो जाएगा a3 a4 all the way till an, and that upon, तो अब ये चीज जिस ar plus 1 है, that means ये a4 से स्टार्ट होते हुए an plus 1 तक जा रहा है. ये सब कैंसिल हो जाएगा. It's just a3 upon an plus 1. That's nice. So now we got a new value for this. Sn is just the product, yeah, from recursive formula, maybe secant square वगैरह आ जाएगा ना. Oh, it's secant, of course, why not? It's secant square of pi upon 2 power, well, basically 2 power r as it goes to r plus 1. कहाँ से कहाँ जा रहा है? r plus 1 goes from 4 to n plus 1, right? That's how it is. अब ये टाइप की चीज अपन पहले कर चुके हैं एक्चुअल में, right? It is very much so in the end you will just get क्या
हाँ ठीक है, वो अपन बाद में सोच लेंगे, पहले तो ये चीज कर डालते हैं. सो a3 all of this times a3 upon a n plus 1. Okay, perfect. That's perfect. Or thing is the product from 4 to n plus 1 of cosine of pi upon 2 power r, right? That can be written differently. So हम क्या कर सकते हैं कि sin pi upon 2 power n plus 1 से multiply करो, divide करो. So just be 1 upon sin pi upon 2 power r n plus 1. और उसके बाद में हर कोसाइन के लिए तुम्हें एक 2 लगने वाला है. सो जस्ट से डिवाइड बाय 2 पावर कितने कोसाइन आएंगे इसमें. सो यू आर गोइंग फ्रॉम 4 टू n plus 1. दैट्स समथिंग लाइक 1 टू n minus 2. सो तुम्हें n minus 2 इसमें 2 लगने वाले हैं. और वो सब करने के बाद में you just get in the end तुम्हें सिर्फ साइन ऑफ पाई अपॉन 2 पावर 3 मिलेगा. एग्जैक्टली साइन ऑफ पाई अपॉन 2 पावर लाइक पाई अपॉन 8 whatever. Oh look, this is somehow similar to, अच्छा ठीक है, जो a3 है that's just equal to basically just secant नहीं, यहाँ पे क्या जगह. Oh, so 1 minus tan squared. It's like cosine squared minus sine squared upon cosine squared. So yeah, whatever. ठीक है ना, no big deal. This is awesome. तो ये पूरा in the end ऐसा कुछ भी हो जाएगा, right? So जो लास्ट कोसाइन ऑफ यानी पाई अपॉन 2 पावर 4 है तो उसको भी एक साइन मिल जाएगा in the end. Yeah, perfect. Okay, cool. तो अब अपन ये सब कर चुके हैं, तो इसका जैसे इसका स्क्वायर करना है एंड रेसिप्रोकल करना है इसका. सो एस एन इज एक्चुअली, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ. सो एस एन इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और रेसिप्रोकल करने का में 2 पावर 2n minus 4 sine squared of pi upon 2 power n plus 1, that upon what is this thing, sine of pi upon 8, so square, so sine squared of pi upon 8, and that times a3 upon an plus 1. So a3 is just, it's like 1 minus tan squared. Is there a better way of doing it? Is there a better way? We can write it as cosine of pi upon 2 power r minus 1, and that upon cosine square of pi upon 2 power r plus 1. Yeah, that might work. So this thing is basically just cosine of pi upon, तो अब क्या है यहाँ पे n plus 1 नहीं, सॉरी 3 से स्टार्ट करें. तो 2 पावर 3 उसका 2 टाइम्स हो जाएगा 1 अपॉन 2 पावर 3. तो फिर हो जाएगा 2 पावर 2 यानी कि पाई अपॉन 4, दैट अपॉन कोसाइन स्क्वायर ऑफ 4 पाई अपॉन 8 ये चीज, एंड दैट अपॉन कोसाइन ऑफ पाई अपॉन 2 पावर n upon cosine square of pi upon 2 power n plus 1, something like that. Is that correct? Yes, looks correct. Oh, unfortunately यहाँ पे sin square यहाँ पे cosine square है. This is not happening. I wish कुछ अच्छा हो पाता कि ये somehow sin of 2 power n. We'll think about it. So it's just going to be what? तो ये ऊपर डाल दो. So it's sin square of cosine square. So we just need 4 for this. So multiply by 4 divided by 4, it just be 2 power of 2n minus 6, and then it's just going to be sine squared of pi upon 2 power n, right? इसको ही मिनिमाइज कर डालते हैं. इसको पहले हटाओ थोड़ा सा. कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसको चलाना. You know what? this बाद में लिख लेंगे. Okay, so 2 power 2n minus 6, and then it's just going to be sine squared of pi upon 2 power n upon sine squared of pi upon 8 to hey, right? It will be cosine of pi upon 4 and then cosine square of pi upon 8. इसलिए अभी तक आपको चिंता की जरूरत नहीं. So cosine of pi upon 4. Oh, so मुझे 4 वगैरह ऐड करने की जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ पे भी कर सकता था, right? So just 1 minus 4 like this, or over here we'll just write sine squared of pi upon 4. Nice. Isn't that right? Yeah, look, this is really nice.
बस ये और ये भी तो है जो अपन यूज कर सकते हैं। तो इतना पार्ट तो निपट गया, राइट। ये चीज को अपन ने कंबाइन कर दिया सब कुछ होके। जो कोसाइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 था उसको अपन ने क्या किया, वो तो अपन कंबाइन कर चुके। ये भी अपन ने यूज कर लिया, ये दोनों के अपन ने यूज कर लिए, जस्ट ये रह गया। सो कोसाइन ऑफ पाई अपॉन 2 पावर n, इट्स नॉट इन स्क्वायर अनफॉर्चुनेटली, तो इसको अपन ऐसे डायरेक्टली कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है, हो जाएगा दिस will be different. So sine upon cosine and then just a sine. That is not good. तो एक तो tan हो जाएगा और एक जगह साइन, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ tan अपॉन sec. That is just disgusting. क्या हुआ, ये क्यों हुआ? ठीक है, अपने को ये इन दी एंड मिल गया है। And now the question is that what happens as n tends to infinity of this thing, right? So what does Sn approach? ये हो जाएगा sin squared of pi upon 2। ये तो 0 अप्रोच कर रहा है, this is not good. Oh, ये भी तो है, ये भी तो है। Yes. So 2 power 2 कुछ is like infinity or something. So ये infinity times 0 कुछ भी अप्रोच कर रहा है, cool. This thing is just sin squared pi upon 4, which is 1 upon 2, यहाँ पे 1 upon square root 2 आ जाएगा, right? That just goes on the top, it will be square root 2, so ये पूरा square root 2 हो जाएगा, I think so. So square root 2, इसको मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, 2 power 2n and then minus 4 का मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, right? 2 power 2n is so much bigger than this. Oh, यहाँ पे भी pi upon, okay, that's how it works. Exactly. ये तो गया, because छोटा सा एंगल है इसमें, तो 1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 पावर 2n माइनस 4, एंड नाउ फॉर द गुड पार्ट, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, पाई स्क्वायर्ड अपॉन 2 पावर 2n। नाइस। So square root 2 power -4, which is just 1 upon 16 or something, and pi squared. That is what this thing. Pi cube क्यों दिया? यहाँ पे pi square देना चाहिए था। क्या? Why is this pi cube? Wait, why pi cube? ये तो इंटीजर नहीं होगा, बिकॉज पाई क्यूब नहीं से मुझे पाई स्क्वायर मिल रहा है। मुझे यहाँ पे कहते पाई इवेंचुअली मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला फॉर सम रीजन। नहीं, मुझे पाई क्यूब मिलने का कोई तरीका तो दिख नहीं रहा यार। नहीं यार, नो रीजन कि मुझे पाई क्यूब मिले। पाई स्क्वायर जस्टिफाइड, बट गॉड, इतना बड़ा करने का क्या गलत किया अपन ने? सो आई डोंट थिंक इसमें इवेंचुअली पाई क्यूब निकलना चाहिए, बिकॉज जैसे अपन ने किया यहाँ पे Indian causes this thing, so not pi cube or anything, unless of course यहाँ पे एक और sin of pi upon 2 power something बड़ा कुछ होता, then that would have been cube and something, but यहाँ पे 2 power 3n नहीं था, it was just this, and that honestly should have worked. इतना पूरा करने के बाद में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, मतलब कि क्वेश्चन गलत है, राइट? तब देखो एसएन मिल गया, एसएन इज जस्ट दिस थिंग। ऊपर से यार ये स्क्वायर रूट वगैरह में आ रहा है, इट्स नॉट इवन, हाँ वैल्यू कुछ तो अजीब आ रही है, राइट? क्या मुझे पूरा वापस करना चाहिए? आई थिंक सो। सो अपने को मेथड समझ गई, एंड नाउ विल डू इट करेक्टली दिस टाइम। दिस इज अ नाइस थिंग। मैं इस टाइप का मतलब इवैल्यूएशन बाद में लिख सकता हूँ प्रॉपर। सो लेट्स डू इट। सो Sn इज, अच्छा पहले तो स्टार्ट करते हैं ये 1/2 बनाना स्टैंड वगैरह वो सबसे। सो लेट्स जस्ट फिगर आउट कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वो फिगर आउट नहीं करेंगे, स्टार्ट विथ दिस। ओके नो, oh we could go by cosine of 2, okay, that makes sense। वो पूरा टेलीस्कोप करने की जरूरत ही थी नहीं इनफैक्ट। सो अपना जो हर टर्म है
every term we can write this as 1 minus tan square of pi upon 2 power r. 1 plus tan square just secant square, so upon cosine square of pi upon 2 power r, and this thing can be written as cosine of, so pi upon 2 power r minus 1 because 2 times of that, and that upon cosine square of pi upon 2 power r. And guess what, yeah exactly, यहाँ पे नीचे आ जाएगा जस्ट कोसाइन पावर 4 पाई अपॉन 2 पावर आर. तो अपने को बेसिकली इसका समेशन करना, सॉरी इसका प्रोडक्ट करना है. सो या नाइस, चलो ऊपर का प्रोडक्ट देखते हैं. ये इसको अलग अलग भी करना हम डायरेक्टली कर सकते हैं. सो जस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम r इज इक्वल टू 3 to n and since the product from r is equal to 3 to n as well, so ऊपर को मैं लिख सकता हूँ कि is product from r minus 1, so r minus 1 को r से रिप्लेस करो, so r is equal to 2 to n minus 1 of cosine of, ठीक है वो सारी चीज. और फिर मुझे 2 to n, मुझे 3 to n चाहिए राइट. सो हम फोर्सफुली r इक्वल टू 3 वाली टर्म्स पुट करेंगे और r इक्वल टू n वाली टर्म भी पुट करेंगे. सॉरी r इक्वल टू वाली अपन निकाल लेंगे, r इक्वल टू n वाली पुट करेंगे. सो अगर r इक्वल टू वाली निकाल ले जिसको साइन ऑफ पाई अपॉन 2 पावर 2 जस्ट पाई अपॉन 4, और अगर n वाली टर्म अपन को पुट करनी है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन ऑफ पाई अपॉन 2 पावर n राइट. एंड देन इज जस्ट द प्रोडक्ट, सो हाँ हो जाएगा 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ, सो r इक्वल टू 3 से n एंड देन जस्ट कोसाइन पावर 3 ऑफ पाई अपॉन 2 पावर r, बिकॉज ऊपर की चीज एक्जैक्टली सेम प्रोडक्ट हो गई, सो वो कैंसिल हो गया. अब अपने को सिर्फ ये चीज करनी है, तो इसका क्यूब करना है बेसिकली राइट, ये चीज का क्यूब. तो ये करने के लिए वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ पाई अपॉन 2 एंड देन डिवाइड बाय दैट थिंग, सो लाइक डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई अपॉन 2 पावर n, मल्टीप्लाई कर दिया. यू आल्सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 पावर कितने इसमें लगने वाले n-2 बिकॉज 3 till n, सो n-2 एग्जैक्टली. और वो होने के बाद में इट विल जस्ट कास्केड डाउन और ये हो जाएगा फाइनली r इक्वल टू 2 वाली टर्म, यानी कि साइन ऑफ पाई अपॉन, सो या इन दी एंड जो अपने को r इक्वल टू 3 रहेगा, सो 8, सो इसका 4 हो जाएगा. एंड ये सब कुछ क्यूब, और दिस इज बैड राइट, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी. तो अच्छी बात है कि जैसे n approaches infinity, this thing is just gone, और ये चीज 1 upon square root 2 हो जाने वाली है. so 1 upon square root 2 into ये सबका क्यूब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज, और सो वी कैन राइट दिस एज अपॉन 4, मतलब कि ये 4 यहाँ पे आ जाएगा राइट. और टर्न्स आउट कि ये टाइम्स ये दैट्स जस्ट इक्वल टू 1 राइट, सॉरी दैट्स इक्वल टू पाई बिकॉज पाई अपॉन 2 स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. so this will be a sin of pi upon 4 just 1 upon square root, so 2 square root 2 upon pi की power 3. nice, so that will be pi cube upon, तो हाँ इनफैक्ट वो pi cube वगैरह आना चाहिए था इसमें, बट पता नहीं पहले क्यों नहीं आया. फिर इसलिए तो मिस्टेक की होगी अब हमने. and then this thing is just 2 power 3, so 8, and then square root 2 का cube, so 2 square root 2 once again, so it's just pi cube upon 4 into 8, 32. so that's it, that is what Sn is. so pi cube upon 32 से डिवाइड करेंगे, it's just 32. That's our answer. So 63 का 32. It's a nice question यार. टाइम लगा है काफी करने में, बट अच्छा क्वेश्चन था. 64th. The common chord of these circles S1, S2 subtends the right angle at the origin. Positive value of K must be. ये दो सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड सबटेंस. ओके, सो आई थिंक अपन ने पहले भी किया हुआ है राइट. ओह वेट, इसमें थोड़ा सा अलग ही केस है, बिकॉज एक तो सिर्फ सेंटर के अराउंड बैठा हुआ है एक सर्कल, और दूसरा जो है दैट इज एट x इक्वल टू a, तो वो a दूर है. एंड इट सबटेंड्स अ राइट एंगल, तो ये जो चीज है दैट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन. दिस इज राइट एंगल, दैट जस्ट मींस ये तो r यानी कि 2 square root 2 राइट. तो ये जो पूरी चीज होगी दैट जस्ट इक्वल टू 4 एंड दिस थिंग इज जस्ट इक्वल टू 2 बेसिकली. एंड ये जो रेडियस ए बी सी की जस्ट 2 square root 2, सो इट्स एक्चुअली नॉट दैट हार्ड टू फाइंड व्हाट a इज, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा राइट. ये 45, ये 45, so yes, and there we go, it's done. This whole thing is just 4.
4 इज अवर ए वैल्यू। ये तो बहुत ही छोटा था, क्यों ऐसा मतलब पहले क्वेश्चन ऐसा दिया तुमने इतना प्रॉब्लमेटिक, और अब ऐसा घटिया सा क्वेश्चन आ गया। 65। ओह या दिस, अच्छी बात है कि अपन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स ही कर चुके, राइट? व्हाट वाज दिस नेगेटिव पाई अपॉन टू नेचुरल लॉग 2, राइट? सो 0 टू पाई अपॉन 2 एग्जैक्टली, दैट वाज जस्ट नेगेटिव पाई अपॉन टू नेचुरल लॉग 2। सो 0 टू पाई दैट वुड हैव बीन नेगेटिव पाई नेचुरल लॉग 2 और समथिंग। हमने कैसे किया था मैं, मुझे स्टिल वो याद नहीं है, बट वी डिड इट, यस, वाज द थिंग, नेगेटिव पाई अपॉन टू नेचुरल लॉग 2। या आई थिंक अपन ने somehow इसको 2 sin x को sin x में कन्वर्ट कर दिया है, दैट वुड हैव वर्क। सो मैं सिर्फ एक बार वापस उसको ट्राई करता हूँ करने का। सो i इज इक्वल टू दिस एंड दैट, यस, सो वी कैन से i is half into, let's just say 2i, so 2i is integration from 0 to pi upon 2 natural log of sin x cosine x dx, and the good thing is that we can do 2i is equal to integration from 0 to pi upon 2 natural log of sine 2x minus natural log 2 times dx, and that's just equal to, so जो पहली चीज है we can just write this as half, oh also it's 2x, so half करने से d 2x हो जाएगा, and that will go from 0 to pi now, but 0 to pi की अच्छी बात है कि वो सिमेट्रिक रहेगा, तो अपन उसको वापस कट डाउन कर सकते हैं, so just going to be equal to I, nice, so equal to I and then minus natural log 2, और वो 0 से pi upon 2 जा रहा है, so just minus pi upon 2 natural log 2, and there we go, that's our result, that I is just equal to pi upon 2 natural। ये तो काफी इजी था, so तब मुझे नहीं पता था कि इतना इजी होता है, but अब मुझे पता है क्योंकि अपन एक बार कर चुके ऑलरेडी। So I1 figure out, easily figure out कर सकते हैं अपन इसको तो, and I2 is this thing, so it's from negative pi upon 4 to pi upon, so इनका अगर मैं एडिशन करूँ just इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसमें 0 माइनस x पुट करता हूँ then this will be negative sin x plus cosine x or something। Hey, why does this look like कि yeah, this looks awfully familiar। अगर बस यहाँ पे I sin x होता तो फिर अपन आराम से कर पाते, I mean it would have been a piece of cake, but नहीं है वैसा, so still whatever। cosine plus sin x को डायरेक्टली अपन e पावर I समथिंग में नहीं एक्सप्रेस कर सकते ना, that will be hard। तो कोई और तरीका, मतलब वो नॉर्मल तरीका तो है ही अपने पास, जिसको सारा तो क्या हो जाएगा 2i is equal to integration of 0 so negative pi upon 4 to pi upon 4, और मे भी अपन इसको डायरेक्टली लेट्स से 1 upon square root से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड देन यू कैन चेंज दिस, सो x plus pi upon 4 कर सकता हूँ इसको, राइट? दैट वुड बी द बेटर थिंग टू डू। सो i is just equal to, so integration of natural log, so मैं 1 upon square root से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, so like square root 2 times sine of x plus pi upon 4, right? And dx, and it goes from negative pi upon 4 to pi upon 4 and whatever, so it's very easy, just write this as 0 to pi upon 2 natural log square root 2, which is just half natural log 2, and then plus natural log of sine x dx, there we go। अब ये तो easy है, right? So half natural log 2 and it goes from 0 to pi upon 2, that would just be pi upon 4 natural log 2, right? And then ये जो चीज है इसका तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, just negative pi upon 2 natural log 2, and yeah, this will just be negative pi upon 4 natural log 2, and that means I2 upon I1, so नहीं, अपने को I1 upon I2 करना है, because this is bigger, this is smaller, तो वो 2 हो जाएगा, 65 का 2, नाइस, वो मैंने किया ही, अच्छी बात हुई, मुझे लगा ही था कि ऐसा कभी ना कभी वापस पूछेगा, क्योंकि हाँ ठीक है। नेक्स्ट, if the complex number, these complex numbers represent the vertices of an equilateral triangle such that mod of z1 is equal to mod of z2 equal to mod of z3, oh yeah, so center है triangle का, that's the origin, then z1 cube plus z2 cube plus z3 cube minus 3, right? So you know like z1 plus z2 plus z3 is equal to 0, right? तो ये जो पूरी चीज होगी, just we can write this as 0, but what's the deal about it? Come on man, seriously, मतलब सिर्फ एक तीन वेक्टर्स है जो कि 120 डिग्री एंगल बनाते हैं दूसरे से, तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मे बी यूनिट वेक्टर्स नहीं बट सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है, सो उनका एडिशन तो 0 होता है,
दैट्स वाई z1 प्लस z2 प्लस z3 इज गोइंग टू बी 0। और फिर क्या, फिर तो नॉर्मल तुम सिर्फ अलजेब्रा से प्रूव कर सकते हो कि ये चीज 0 हो जाएगी, राइट? या फॉर एग्जांपल अगर z1 z2 z3 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते, देन दिस वुड बी बेसिकली 1 क्यूब 1, देन ओमेगा क्यूब दैट इज 3, सॉरी once again 1 and then omega square का cube which is also 1 and then minus 3 z1 z2, so उसमें omega cube आ जाएगा, वैसे भी just minus 3, so it's just 0, right? 66 का answer is 0। 67th, let f of x be equal to this, so it's 1 minus mod of x if mod of x is less than or equal to 1 and 0 if mod of x is bigger than or equal to 1। तो इसको अगर ड्रॉ करूं then तो अगर इसको ड्रॉ करूं then when mod of x is bigger than 1, so ये 1 और negative 1 से जब बड़ा है then it's 0। it is 1 minus mod of x when x is less than or equal to 1, so at x something less than 1, 1 के पास में बहुत, yeah whatever, just do it। so in this region जब mod x कैसा रहता है, mod x is just like this, negative mod x कैसा रहता है like this, 1 minus mod x कैसा रहेगा like this, right? because यहाँ पे वैल्यू 1 होनी चाहिए इस लेंथ की, दैट्स व्हाई ऊपर शिफ्ट करने पे ये एग्जैक्टली मैच होगा। सो बेसिकली काइंड ऑफ आई डोंट नो, जो भी ये ट्रायंगल, राइट, दैट इज f of x and g of x is f of x minus 1 plus f of x plus 1। wait, what? oh so f of x, oh, sorry, this is f of x, right? what would f of x minus 1 would be? तो अपने को सारी x की वैल्यूज को 1 से बड़ा करना पड़ेगा ताकि अपने को सेम y वैल्यूज मिले, राइट? तो इसलिए अपन पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स, या सो ये नेगेटिव 1 का 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई ऐसा हो जाएगा, दैट वुड बी f of x minus 1 और f of x plus 1 दैट वुड बी सम ग्राफ लाइक दिस। और फिर इनका सुपरपोजिशन बोल रहा हूँ, फिजिक्स टर्म है, बट यू नो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पूरा सिर्फ 0 है, एंड दैट्स व्हाई सिर्फ 0 प्लस तुम्हारा f of x minus 1 हो गया, एंड दैट्स व्हाई ये ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। फाइन, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर g इज नॉट डिफरेंशिएबल, कम ऑन, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेगेटिव 1 1, ये पॉइंट भी है जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एंड यहाँ पे नहीं, जैसे 4 पॉइंट्स है। गुड, सो 67 का 4, दिस वाज नॉट दैट हार्ड। 68 करते। In triangle ABC, circum radius is 3, so capital R is equal to 3. In radius is 1.5. If the value of a cot square AB square cot cube is E plus C cube cot power 4C. Oh god. Hey, so we know something कि जो तुम्हारा इंसेट की बात कर रहे हैं अपन, तो क्या हो रहा है? ओके, a अपॉन 2 वगैरह वो यूजफुल है, आई नो डाउट इन दैट, बट ओके दिस इज नॉट दैट यूजफुल। कॉट ऑफ a, हाउ इज दैट, राइट? तो इन रेडियस में वो उतना यूजफुल नहीं है, आई गेट दैट। वेट, इफ यू नो व्हाट द इन रेडियस इज, what this thing is, yes, we know that, then okay, this is still not doable, or you know, just small r upon capital R, just 1 upon 2 whatever। तो yeah, trigonometry कर सकते हो उसमें, no doubt in that, but क्या मिलेगा अपने को वो करके? okay, still याद करो कैसे किया था अपने। r is 4r times, what was it? Just remember it. Oh yeah, so this was, I think, sin A, sin B, sin C, because wait, what? Okay, first of all, you know that 2r is equal to a upon sin A, right? Sin capital A and whatever. So you can just say कि by theorem on equal ratio, this is equal to 2 times the semi-perimeter upon sin A plus sin B plus sin C. This is the same thing as 4 times of cosine A upon 2 cosine B upon 2 cosine C upon 2, right? Yeah, because
ए बी सी का ए अपॉन साइन का कोसाइन हो जाता है, बट व्हेन इट्स 2a टू बी टू सी उसका नहीं होता है ऐसा, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं a को 60 डिग्री ले रहा हूँ इक्वल टू ट्रायंगल, so this would just be 3 times the square root 3 upon 2, and this is also yeah, because a upon 2 is 30 degrees, so the cosine square root 3 upon 2 है, so this is also going to be 3 into square root 3 upon 2, so this works, right? And that means कि your what was I doing once again, right? That r is just either 1 upon 2 हो जाएगा, right? So it's going to be s upon 4 product of cosine a upon 2, and then there was something similar for this small r, right? तो क्या करते थे हम कि small r ऐसा है, you know, this thing is just a upon 2, और ये जो पूरी चीज है that is yeah, that is just s minus a from previous calculation, मेरे को पता है because ये पूरा sorry, ये पूरी साइड a हो जाएगी, and then this is s minus a, this is s minus b, I think. तो एडिशन करने पे will be a plus b plus c minus a minus b, so c हो जाएगा, and that's why this works. तो yeah, you can just say okay, s minus a, that is r times cot of capital A upon 2, right? तो अगर मैं इसका सम कर डालूं then r summation of cot A upon 2, that would just be equal to s minus a plus s, ठीक है? तो वो 3s minus 2s हो जाएगा, which is equal to s. There we go. Or the good thing is that summation of cot A upon 2 is the same thing as product of cot A upon 2. So like, yeah, cot A upon 2 is equal to s, but we know that for capital R product of cosine of A upon 2, that's equal to अच्छा नहीं, तो फिर या क्या किया था मैंने, r अपॉन कैपिटल R का मैंने क्या किया था, कोसाइन A, नो ये तो अलग चीज है, whatever. Yes, sin A upon 2 cosine, sorry, sin A upon 2 sin B upon 2 sin C upon 2, that was the thing. Yes, that was the thing for sure. तो फिर ये तो क्लियर है कि r is just 4r times product of sin A upon 2, so that's nice. And because small r is just capital R upon 2, this is more like 1 upon 8 is equal to product of sin A upon 2. That's all it's giving. Seriously, सिर्फ इतना ही बोला है अपने को, राइट? हाँ ठीक है, साइड्स भी तुम्हें बताए गए हैं, यस, बट एंगल्स के टर्म में तुम्हें सिर्फ इतना ही बोला है. नाउ व्हाट डू वी डू, यहां से क्या? So we want a cot square a plus b square cot. So this is like a cot a times cot a, तो यहाँ पे b cot b का square times cot b and so on, right? So अगर somehow a cot a would be equal to 1 or something, okay, no, this is stupid at this point. Look, the problem is कि a and b square and c cube, these are, यार ये जो है ना, इसमें लेंथ है, इसमें लेंथ स्क्वायर है, इसमें लेंथ क्यूब है, तो आई डोंट थिंक कोई जेन्युइन इसमें रिलेशनशिप रहेगी. ओनली वे टू एक्चुअली डू दिस इज टू फाइंड ए बी एंड सी, राइट? दैट इज जस्ट रियली बैड. Wait, what circumference is 3, not, oh okay, sorry, yeah, hold on. Small r upon r, that is this thing, right? It's 1 upon 8 right there, right? So yes, 1 upon 8, that is equal to product of, yeah, this thing. So hey, what's the maximum value of this? Oh yeah, so sine of 30 degree, sine of 30 degree, 1 upon 8, that would be the maximum value of this thing, I think. अब वो तुम पूछोगे कि मैंने कैसे प्रूव किया कि मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने प्रूव नहीं किया, जस्ट अज्यूम किया, सिमेट्रिक केस. हाँ, इट वुड बी नाइस टू प्रूव दैट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, बट वो मैं छोड़ देता हूँ, वो नहीं करते यार, बिकॉज आई डोंट लाइक इट. Seriously, how do you prove ये maximum value? Well, you could do something like this, कि 1 is equal to 2 times, फिर 1 upon 2 is equal to, so 4 product of sin A upon 2, you know what that is, right? That is oh okay, so I'm starting to understand क्या हो रहा है यहाँ पे. 1 upon 2 is just 4 product of sin A upon 2, and what do we know upon about summation of cosine A? Summation of cosine A, that is
This is getting really bad, isn't it? Yes, it is. It's really bad. So cosine A का summation, that's just equal to 4 product of sine A upon 2, and I think minus 1. I think minus 1. Let's check. अगर ये equilateral है, then ये हो जाएगा basically 1 upon 2 3 upon 2. 3 upon 2 is equal to 4 times of sine of A upon 1 is equal to, so 4 upon 8, right? So 1 upon 2 minus 1 में यहाँ पे plus 1 होना चाहिए, right? Yeah, that would be 3 upon 2, I think. Perfect. So there we go. This is our formula. So this is just equal to this minus 1. There we go. So this is basically saying summation of cosine of A is equal to 3 upon 2. अब ये prove करना कि इसकी maximum value 3 upon 2 है, that is, I mean, it's still kind of complicated. Yes. What can we do to just do it easily? You can write this as cosine of A plus cosine of B minus cosine of A plus B because cosine C, just like that. Okay. And what we want is the oh well, I'm thinking something different. We can write this as 2 cosine of A upon A plus B upon 2, and then cosine of A minus B upon 2, and over here just the minus, so 2 cosine squared of A plus B upon 2 plus 1 and whatever. So 2 cosine of A plus B upon 2, A plus B upon 2 मैं x बोल रहा हूँ, so just 2 cosine x, and then यहाँ पे जाएगा cosine of y minus 1, right? Isn't that? Oh yeah, sure. So it just, okay, not minus 1, it's gonna be this thing, so minus cosine of x. Not good, not good, not good. Yeah, यहाँ पे साइन भी वगैरह आने वाला है, नॉट डूएबल है. तो इसका एक ही तरीका बचता है कि इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 पे इक्वल रखना पड़ेगा. That's just really a lot of problematic thing to do. तो ठीक है यार, करते हैं माइनस साइन ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए. So partial with respect to a, that is 0, and then similarly partial with b अगर 0 करना है, so this should be happening plus sin of a plus b is equal to 0. And yeah, from here it's clear कि हाँ, it is going to be like that कि sin A is equal to sin C, sin B is equal to sin C, and that only happens when A, B, C are all equal, right? इनमें से कोई एक obtuse हो गया, then not good. Yeah. अगर एक obtuse हो गया, then well, okay, even if it's कि one of them is obtuse, it's still actually doable, not that problematic. But maybe वो minimum value देगा, in fact. Yeah, looks like कि वो minimum value देगा. The maximum value will be जब तुम्हारे सारे cosine value जो है वो positive हो जाए, which can happen, so definitely. So there we go. अपन ने prove कर दिया कि yes, this has maximum value of 3 upon 2. So क्या हो रहा है इसमें कि ये basically एक equilateral triangle हो गया. अब मुझे पूरा prove करने की जरूरत नहीं थी. अगर मैं actually में proper exam में होता तो फिर सिर्फ ये जो मुझे दिख गया था कि product of sine of a upon 2 is equal to 1 upon 8, I would have said कि हाँ, equilateral triangle है, शायद से वही हो रहा है. बट वी डिड इट, प्रूव कर दिया अपन ने कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है. एंड हाँ, तो क्या करना था वैसे, राइट, अपने को ये वैल्यू ढूंढनी थी. सो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर, वो चीज ढूंढना इतना मुश्किल नहीं. कॉट ए एंड कॉट बी एंड कॉट सी ऑल आर जस्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और ए बी सी सारे के सारे इक्वल है. एंड बाय द वे सर्कम radius is 3. Oh yeah, so we can just use one of these. So R summation of cot A upon 2 equal to S, right? So S is just 3A upon 2 and cot A upon 2 का summation. So A upon 2 is 30 degree. उसका summation, that's square root 3, but 3 times of that. So R times of 3 square root 3. Just, yeah, cot 30 degrees is square root 3, isn't that right? So that is equal to 3 upon 2 times whatever the side length is. So our small in radius is just equal to, oh, and we actually know what small in radius is. So it's
5 यानी कि 3/2 cancels. So yeah, a is equal to 3 square root 3. There we go. तो साइड लेंथ 3 स्क्वायर रूट 3 का इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बोला था. तो ठीक है, साइड लेंथ इज जस्ट 3 स्क्वायर रूट 3 एंड क्या चाहिए अपने को? cot a ऐसे इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. So let's do it. First of all, a cot a, that will just be 9. So that will be 9. और एक काम करता हूँ, हर जगह से मैं cot a कॉमन ले लेता हूँ, राइट. सो दिस विल जस्ट बी स्क्वायर रूट 3 कॉमन. अब देखते हैं a cot a, दैट्स 9. फिर b square cot square b, that is 9 square. Then this is just 9 cube. Nice, very nice. So yeah, this is actually very doable. Square root 3. We can add this as 1 plus something, and yeah, sure, definitely directly 9 common. So square root 3 times 9. और फिर क्या जाएगा? 1 plus 9 plus 9 square. So 1 plus 9 plus 81. That's just 90. So 91 times 9, which is 819. 819 square root 3. That is the one answer, I think. So this is m square root n, of course, 819 square root 3. But m and r prime numbers, and find the. No, these are not. 819 is not a prime. Okay. क्या करना था मैं? सॉरी, आई थिंक मैंने स्मॉल आर गलत कैलकुलेट किया, क्योंकि यार ओके या प्रॉब्लली वही हुआ होगा कि मैंने स्मॉल आर गलत कैलकुलेट किया. Well, whatever. You know, like 2a is just equal to a upon sine a, right? तो sine a क्या है वैसे? Sine of 60 degree. So 3/2. There we go. So our a, sorry, to r क्या कर रहा हूँ? A is square root 3 times r, and then r is just 3, so 3 square root 3. That is perfect, यार. वो perfect है, right? Cot a is 1 upon square root 3, right? That's where I went wrong. This should have been 1 upon square root 3, yaar. Then all of this is just wrong. So this will be 1 upon square root 3 common. Let's do it. A cot a, that is going to be 3, and then b cot b ka square, it's 9, and then 27 and whatever. So square root 3 times 23 common here, basically 1 plus 3 plus 9, which is just 13. So 13 square root 3. Finally, so m plus n will be 16. 69. Let x, y be real numbers satisfying the equation. This equation is the maximum value of values of x square and y square, x square plus y square are m and m respectively. Okay, the numerical value of acha circle, right? This is a circle. So x square plus y square की minimum value से same. Yeah, okay, it's not that actually उतना बुरा नहीं है. So just x minus 2 square plus y square is equal to, so negative 3 plus 4, I think just 1. तो 2,0 पे तुम्हारा एक सेंटर है, और वहाँ पे रेडियस कितना है? 1. There we go. और अपने को सिर्फ जो डिस्टेंस स्क्वायर है फ्रॉम द सेंटर, वी वांट दी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस थिंग. सो ये इतना हार्ड नहीं है. मिनिमम वैल्यू सिर्फ ये रहेगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस थिंग. सो yes, exactly. There it is, huh? Fine. So small m, that's just equal to, तो ये क्या है वैसे, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये 2 है, and the radius is 1, so distance is 1 1 1. Fine. So small m, that is just 1 squared, I think, just 1. And capital M, that is 3 squared, 9. So capital M minus small m, that is going to be 8. Go to 70. Okay, next. So 70 क्या है? Value of this integral is this integral. And the numerical quantity k should be. So तुमने इस चीज नेचुरल लॉग साइन ऐसे अपन इसको 1000 बार कर चुके अब तो ठीक है. So अपने को ये इंटीग्रेशन करना है, x square cos x square okay x, and then it's like x upon sine of the square. This is just
Oof. What is this? No. cos x को x अपन cot x कर सकते हैं, वेरी मच डूएबल। 2x हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर का, क्या? और उसके बाद में क्या, उसके बाद अपने को एक और बार x को डिफरेंशिएट करना है, उसमें नेचुरल। अच्छा ठीक है, सो इट इज एक्चुअली वेरी मच डूएबल। स्टिल कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जिससे मुझे डायरेक्टली आंसर ही मिल जाए, यू नो, विदाउट ब्रेकिंग द स्वेट। ये भी नहीं, इस केस में यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, सो आई विश इट वाज ट्रू। Oh hey, what if I change sin square x को मैं अगर let's say 1 minus cosine of 2x ऐसा कुछ भी मैं change कर डालूं, not exactly that, we want sine not cosine। cosine रहेगा then you will have that negative positive change हो जाएगा, this is not good। in case cot होगा still वही same problem हो रही है ना। okay, so yeah, the only way to actually solve this is कि तुम मतलब differentiation by parts और integration by parts करो। Let's do it। Let's go with it। So अपन x square को differentiate करेंगे and we'll integrate cos x square x till we eventually get something nice। So इसको integrate किया just negative cot x, so वापस integrate किया, so cot x का integration is just like natural log of sin x, so basically negative natural log of cosec x, but उसका फिर natural log है, so this is just going to be negative natural log of sin x। differentiate करो 2x and this is just 0 and yeah, now what? so पहला पार्ट क्या रहता है कि you take this integral times the undifferentiated quantity, sorry इंटीग्रेट किया है वो टाइम्स अनडिफरेंशिएटेड क्वांटिटी, और ये प्लस माइनस रहने वाला है बिकॉज जो अपना डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेशन में पार्ट्स है उसमें वो प्लस माइनस चेंज होते रहता है एनीवे, तो या दैट्स व्हाई दिस थिंग। सो माइनस cot x टाइम्स दिस थिंग दैट विल बी आवर फर्स्ट पार्ट, जस्ट नेगेटिव x स्क्वायर cot x। नेक्स्ट पार्ट रहेगा ये टाइम्स ये, या एंड दैट विल बी, हाँ, और जो इंटीग्रेशन रहेगा उसमें तो जीरो चला जाएगा, वेरी नाइस। वो इंटीग्रेशन में जीरो जा रहा है, wait, no, it's supposed to be 2 not 0, तभी बोलो क्या हो रहा है। okay, and then this times that which is just positive 2x natural log of sin x, and then फाइनली जो इंटीग्रेशन रहेगा उसमें अपने को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ऑफ कोर्स इंटीग्रल है, सॉरी अपन ने इंटीग्रेट किया है वो चीज टाइम जो अपन ने अब डिफरेंशिएट किया है जो पहले इंटीग्रल था उसमें का, दैट्स व्हाई ये टाइम्स ये, बट ऑब्वियसली नेगेटिव वगैरह था तो वो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, यू गेट द आइडिया। तो yeah, just negative integration, so 2 times negative integration of natural log of sin x dx and goes from 0 to pi upon 2। okay, this whole thing ये जो सारी फंक्शन है वो भी 0 to pi upon 2 जा रहे। let's see 0 पे ये क्या हो, sin x is 0। okay, so the good thing is कि x upon sin x approaches 1 as x approaches 0 plus, तो फिर वो x square upon sin x it does approach 0, boom, 0 हो जाएगा वो, मतलब पाई अपॉन 2 भी तो x स्क्वायर फाइनाइट है, फर्क नहीं पड़ रहा कुछ, cot x will be 0, so ये तो गया। what about this guy, so pi upon 2 at that point ये natural log 1 हो जाएगा and then okay it's gone, but what at 0, so at 0 so limit as x tends to 0 plus of course and basically x natural log of sin x, what will that be, ऐसे लिखते हैं ना natural log of sin x like this, so yeah, sin x approaches 0, so it's approaching negative infinity। okay, so divide by sin x and then multiply by sin x। okay, तो ये बेसिकली 1 हो जाने वाला है, so just limit as x tends to x से मुझे u यूज करना चाहिए, बट वॉट एवर, तुम्हें एट दिस पॉइंट समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो नेगेटिव में डाल रहा हूँ 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, बिकॉज यस वॉट एवर साइन एक्स भी यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज 1 अपॉन साइन एक्स
और फिर अब मैं ये सॉल्यूशन कर सकता हूँ, जस्ट नेगेटिव लिमिट एज u टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u अपॉन u, एंड गेस व्हाट, एल हॉस्पिटल्स यूज एल हॉस्पिटल यूज किया, तो जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन u अपॉन 1, एंड देन ये चीज 0 कर दिया, सो वी आर डन, दिस थिंग आल्सो गोस टू 0। ओके, तो सिर्फ ये बचा हुआ है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू फाइंड। तो यहाँ पे k2 होगा। ओके, नेक्स्ट 71। 71 is the position vectors of 2 points A and C are this and this. The point of intersection of the vectors A, B, दो पॉइंट्स है, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। इट व्हाट, वेक्टर्स का इंटरसेक्शन, आई डोंट गेट इट। सो बी क्या है और डी क्या है? जस्ट प्रोबेबली ये ए बी लाइन और सी डी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन, ओके, तो ये जो दो लाइन्स है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट पी है। इफ द वेक्टर पी क्यू इज पर, तो क्यू क्या था वंस अगेन? क्यू वी डोंट नो, तो क्यू वेरिएबल है। सो पी क्यू एक वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके, नो प्रॉब्लम, एंड सी डी, राइट, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग है बेसिकली। तो तुम्हें पी ढूंढना है, फिर तुम्हें, ठीक है, पी क्यू इज 15 यूनिट्स द पोजिशन ऑफ, अच्छा, बहुत सारा कैलकुलेशन है सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, तुम सिर्फ ए और सी यूज करके तुम्हें पी ढूंढना है, उसमें ऑलरेडी वेक्टर्स दिए हुए लाइन के लिए। सो या थिंक अबाउट इट, इससे कोई तुम्हें इंटीग्रल मल्टीपल तुमने इसमें ऐड किया, ऐसा कोई तुम्हें इंटीग्रल मल्टीपल इसमें ऐड किया सच दैट तुम्हें सेम चीज मिल गई, ऐसा क्या होता है? सर कौन से इंटीग्रल मल्टीपल्स अपन यूज कर सकते हैं? अब वो 3 वेरिएबल सिस्टम इज जस्ट नॉट नाइस, डोंट वांट टू डू दैट एट ऑल। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट में, फाइन। सो 7 3 7 2, अच्छा ये तो ऑलरेडी 7 और 7 है, राइट? सिर्फ या 2 टाइम्स समथिंग होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टाइम्स समथिंग, सेम समथिंग, राइट? तो व्हाट इफ इट्स जस्ट 2 and 3? अगर मैं 2 और 3 करता हूँ देन 8 + 9 17, और यहाँ पे 6 + 7, नो नो थैंक्स, वोंट डू दैट। सो ये तो काम नहीं करेगा, राइट? 8 एंड, तो ये 2 एक्स्ट्रा है इसमें, 8 + 2 10 और समथिंग, 16 + 2 is 18 and 3 times that, huh? No, it won't work. So that times 24, 24 + 2 is 26. No idea वो कैसे आएगा। Negative somehow, you know, like -2, -3. तो फिर 9 - 8, that's 1, and then 7 - 6, that is 1 as well. नाइस। सो यू नो कि इसको मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं -2 से इसको करता हूँ देन -1 टाइम्स, सो 2 हो जाएगा, 2 + 1 इज जस्ट 1, एंड यहाँ पे आएगा 3 -2 1, कूल। तो वी जस्ट फाउंड आउट कि क्या पढ़ना, जस्ट गोना बी 1, तुम्हारा पी पॉइंट है, जस्ट इक्वल टू 1 बिकॉज यू नो नेगेटिव फ्रॉम साइड, और 1 once again, and then 7 - 6 1, I think. Yeah, exactly. So that's it, that's our point P. अब क्या, मुझे सिर्फ P को यूज करके Q ढूंढना है। सो पी क्यू इज अ वेक्टर एज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी इज दिस लाइन एंड सी डी, तो ये दो वेक्टर से परपेंडिकुलर, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट ले लो इनका, 4 -1 और क्या है 3 क्रॉस 2 -1 and 2, so this will be -2 +3 1। इसके लिए क्या होगा, 8 - 6 that is 2, but negative actually because ऐसा होना चाहिए, and then -4 -2, so -2, मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ 1 2 2, why? because मेरी इच्छा है,
मैं कुछ भी रिड्यूस फॉर्मेट इसका लिख सकता हूँ। तो इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जो भी रहे, ठीक है, इस वेक्टर के कोई मल्टीपल रहने वाला है पी क्यू, राइट। और लेंथ कितनी दी है, सो पी क्यू की लेंथ है 15, तो इस वेक्टर को स्केल करो 15 तक। इसकी अभी लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3, तो 5 टाइम्स स्केल करना है, तो +-5 +- क्यों, क्योंकि अरे यार वो तो ऑब्वियस है, वो तो मैं बताने की जरूरत भी नहीं, राइट। मतलब एक ऐसा, तो इसे दो अपने को पी क्यू वैक्टर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर को ऐड कर दो इस वेक्टर से, सो 1 1 1 +-5 टाइम्स दिस थिंग, सो बेसिकली 1 1 1 ± of 5 10 and 10, so it should be -1, सॉरी, तो -5 10 and 10, तो अगर मैं ऐड करता हूँ जस्ट -4 11 11, अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ जस्ट 6 -9 -9, देयर वी गो, यू आर दी पोजीशंस ऑफ क्यू। अच्छा, तो अगर पोजीशन ऑफ क्यू ऐसी है तो उसके पहले दो तुम दे चुके हो, सो 6 and -9, कूल। सो न्यू शुड बी 9 एज वेल, वैल्यू ऑफ न्यू इज 9। नेक्स्ट 72, 72 इज, ओह गॉड, सच में बैटरी से हो गया। 72, if f of x is equal to this, f dash of 1/2 is equal to pi, and ओके, तो बेसिकली ए ढूंढो इस कंडीशन को यूज करके, तो एफ डैश इज जस्ट -a पाई साइन ऑफ पाई एक्स, यस, या, एंड एफ डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू पाई, तो 1/2 पे जस्ट pi/2 देता, तो लाइक a पाई इज, sorry, -a pi is pi, so a is equal to -1, that just means f of x is negative cosine of pi x. Cool. And integration from 1/2 to 3/2 of f of x is equal to 2.5 + 1. तुमने क्यों दिया, मैं उसको, मतलब तुम ऑलरेडी मुझे f of x दे चुके हो, अब यही कंडीशन मैं क्या करूँ आखिर, क्या, अच्छा सॉरी, प्लस बी दिया हुआ है इसमें, ओह, तो अपने को जब a मिल गया, अपने को b अभी भी ढूंढना है, मैं वो b देखा नहीं अभी तक। ओके, तो इसलिए अपन इसको यूज करने वाले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो बेसिकली ए और बी ढूंढ लो, फाइन। सो cosine of pi x is goes from 1/2 to 3/2, हाँ, so pi/2 से 3 pi/2 का cosine कंप्लीटली नेगेटिव है, राइट, ये इसीलिए दिया होगा, ठीक, करते हैं। पहले तो अपने को इंटीग्रेशन ऑफ cosine of pi x ढूंढना है, which is actually not that bad, it's just sine of pi x upon pi, right, तो यहाँ पे जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, इट गोज फ्रॉम 1/2 to 3/2, right, so basically sine of 1 upon pi sine of pi x, as it goes from 3/2 to 1/2, ulta, so 1 upon pi 1 plus 1 2 upon pi, तो ये जो पहला पार्ट है जस्ट 2 upon pi, और जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी, सो नाइस। तो बेसिकली सिर्फ b का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 to 3/2, which is like just b, because 1 1 to 3/2, 1 का इंटरवल है, so b times 1, so that is equal to 1, b is equal to 1, cool। तो समझ गया, a is just -1, b is 1, तो -12 upon pi, let's see, sine inverse of -1 is -pi/2, and then cosine inverse of 1, that is 0, wow, 6, that's the answer, 72 का 6 आंसर होगा, 73 करते हैं। 73 is, let a, what is this, ai bi be sequences of real numbers such that this happens, of recursion, okay, तो a और yeah, so पहले तो अपन क्लोज फॉर्मेट ढूंढ सकते हैं ए और ए आई और सॉरी ए के लिए, राइट, नहीं नहीं, लुक एट दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज नॉट, alpha formula CR square plus 1, what, why, just wait a second, okay, where was I, तो ये तो डुएबल नहीं है, बिकॉज राइट, ये सीक्वेंस
तो इस फॉर्मूले से तो अपन डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं ढूंढ सकते. Let's talk about BR. So BR is AR plus 2 minus 3 times of AR plus 1, you say. 3 times of AR plus 1. Value of R for which BR attains a maximum value is. So अपने को इनिशियल कंडीशंस में नहीं दिया कि A1 क्या है या फिर A2 क्या है, कुछ भी नहीं दिया, राइट? तो सिर्फ ये दो रिकर्शंस दिया और पूछा है कि BR की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी फॉर सम वैल्यू ऑफ R, राइट? ओह गॉड, what is this 2R upon R power 4 and all that stuff? R power 4 is 3R squared plus 1. तो मैं R square कॉमन ले सकता हूँ, राइट? So इसका 2 upon R और नीचे हो जाएगा R squared plus 1 upon R squared minus 3. तो how is this even useful? No, it's not. It's not useful at all. Think यार कुछ अच्छा. अगर अपने को बी आर ही ढूंढना है सिर्फ, just need to figure out कि ये बी आर मैक्सिमम वैल्यू. अच्छा जो let's figure out कि ए आर प्लस 2 माइनस ए आर प्लस 1 एक्चुअली क्या होना चाहिए. So we can definitely do this, right? Yes, that's actually very much. Hey, you know what? Scrap that. अपने को अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो इनफैक्ट इट्स नॉट दैट हार्ड फिगर आउट कि ए आर समेशन करना हो ना दोनों साइड पे. सो यू जस्ट गेट सो 1 अपॉन क्या ए, लेट्स से अपने को n तक घूमना है. सो ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन प्लस 1 अपॉन लेट्स गो टिल n माइनस 1 एक्चुअली प्लस 1 फिर ए एन एंड देन प्लस 1 अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन प्लस a n minus 2 minus 1 upon a n minus 1 and so on till you eventually get 1 upon of a1 minus 1 upon a2 और फिर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. So basically this, right? So 1 upon a1 minus 1 upon a n, that's equal to the summation of this quantity 2r upon r power 4 minus 3r squared plus 1 whatever. It goes from man I really think इसको हमें somehow factorize वगैरह ऐसा कुछ भी करना चाहिए इसका, but oh wait, I think I know इसको कैसे करते हैं. Just wait. तो r is equal to what is this? It's from, so initially जब मैं r equal to 1 पुट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, right? So 1 and then finally अपन n minus 1 पुट कर रहे हैं. So basically अपने को ये जो भी चीज है वो ढूंढनी है and we'll just have a formula for an. Good. And इसको करना I don't think इतना hard होगा because r power 4 minus 2r squared plus 1 minus r squared, right? And then just r squared minus 1 का square minus r squared. So like r squared minus, sorry, what is this? Yes, minus 1. That should be the thing. That should be the thing. Yes. Perfect. Yeah. So r squared minus r minus 1 and then r squared plus r minus 1. So the thing is 2r, we can write that as r squared plus r minus minus 1 and minus 1 minus of r squared minus r minus 1. So this whole thing is just going to be 1 upon of this. Now the good thing is that this is just r into r minus 1 and this thing is r into r plus 1. So you can see कि r का r plus 1 हो गया and r minus 1 का r हो गया. So ये basically अगली term रहेगी अपनी, right? So we'll just call let's say AR as, I don't know, AR will be 1 upon r squared plus r minus 1. So basically अपन बोल रहे हैं कि summation of 1 upon AR minus 1 minus 1 upon AR. Oh sorry, ये अपन already use कर सकते, अपन A already use कर चुके हैं ना. So we'll just say it's capital A. मैं definition कर रहा हूँ, ये मैंने conclusion नहीं निकाला, it's definition. And it's from r is equal to 1 to n minus 1. So not that bad actually. So let's see, it will be 1 upon a, अच्छा मुझे 1 से start करना चाहिए था, whatever, a0 minus 1 upon
a1 and all the way till 1 upon an minus 2 minus 1 upon an minus 1, and then everything just cancels except this. So there we go. 1 upon a0 minus 1 upon a n minus 1. Cool. And yeah, so basically it's just, which did I put as AR? This thing, right? जब मैं इसमें n minus 1 पुट करूँगा तो बेसिकली मुझे ये मिलेगा, but when r is equal to n. So this is just 1 upon n squared minus n minus 1, negative of that. And then 1 upon a0. That's not that hard to figure out क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, so just -1. So it's -1 minus this thing. That is what it is. Well, yeah. 1 upon an is equal to 1 upon n squared plus n minus 1 plus 1 plus 1 upon a1. Cool. So you got it. 1 upon an is just this thing. Fine. Now it really depends कि a1 की वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंगली अपने को सीक्वेंस मिलने वाला, राइट? Yeah, whatever. And then 2br is equal to r2 minus 3r. Okay. ar plus 2 and then ar plus 1. Oh god, what is this value of r for which this is actually maximum? Oh god, ये तो 1 upon ये पूरी चीज minus what? No, this is bad. Okay, let's say कि अपन ये इनके मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ar plus 2 times ar plus 1 into 1 upon ar plus 1 minus 3 upon ar plus 2, something like that. Still वो अपने को गंदा वाला पॉलिनोमियल देने वाला है. Not worth doing. Man, how it, अगर ये कितना इतना अच्छा था ना, अगर somehow a1 that would have been, I don't know, -1, तो फिर अपन डायरेक्टली an equal to n square plus n plus 1 लिख पाते. Yes, it would have been really nice. प्रॉब्लम है कि अब पता नहीं कि a1 क्या है. हे बट अपने किसने अपने को रोका है ऐसा नया सीक्वेंस करने के लिए? ठीक है ना, कर दो. a1 को -1 अगर अपन पुट कर देते हैं देन टू इट शुड वर्क बिकॉज हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं कर सकता हूँ जो अच्छा लगे. देन दैट्स इट. What I will do is I will set this as -1, so it's done basically. Just an is equal to n square plus n minus 1. Boom. Wow. So ar plus 2 minus 3 times of ar plus 1. Now it's just trivial. It's calculation. Isn't that right? This is like a quadratic or something. ये भी quadratic रहेगा. Yes. With fine. Maximum value of, wait, but that only happens when n becomes, okay, नहीं, ये negative of some, okay, doable, very doable. क्योंकि इसमें downward parabola मिलेगा अपने को. So let's do it. So we are talking about what? ar plus 2 and ar plus 1. So that will be, let's do it. Ar plus 2, that is just r plus 2 square plus r minus 1. So basically r plus 2 into r plus 3 minus 1. It's like r squared plus 5 r plus 6 minus 1 plus 5. And then ar plus, sorry, wait, what? Ar plus 1. Yeah. That will be r plus 1 into r plus 2 minus 1. So r squared plus 3r plus 2 minus 1. So plus 1. Nice. Minus 3 times of that, and minus 2r squared. 5 minus 9 minus 4r. 5 minus 3, that is just plus 2. Right? That is our 2br value. So basically br is negative r squared negative 2r plus, yeah, right, plus 1. I mean, I'm still skeptical कि वो a1 की वैल्यू चेंज करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मे भी नहीं पड़ता है क्या? ऐसा कोई पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये डेफिनेटली 0 ही होने वाला है? I don't think so, but
है whatever, मे बी ये कोई डेटा की लिमिट अप्रोच करेगा एंड whatever, बट अपने को सिर्फ सॉल्व करना है, वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट द होल फॉर्मल प्रूफ, तो फिर इसको बस ऐसा रहने देते, राइट। इट फील्स लाइक चीटिंग एक्चुअली, क्योंकि ये सही नहीं है, वी शुड प्रूव कि ये काइंड ऑफ ऐसे बिहेव करता है, यानी कि मैक्सिमम आर, जब मैक्सिमम चाहिए अपने को बी का, देन आर शुड बी वन, वी हैव टू प्रूव इट एक्चुअली फॉर्मली, बट अभी के लिए रहने देते, मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली वो एक्सपेक्ट भी कर रहे कि मैं ऐसा कुछ भी प्रूव करें, और या सिर्फ टाइम खराब होगा हमारा। सो आर इक्वल टू वन, दैट्स इट, दैट्स व्हेन यू हैव टू मैक्सिमम। ओके नेक्स्ट, so 73rd done, let's go to 74th. The perimeter of right triangle is 12 plus 8 square root 3. The sum of the square of all sides is 294 square units. If the area of the triangle in square units is delta, find the value of delta square. The perimeter दिया है, sum of the right triangle, very nice, very nice. Sum of the square of the three sides. Wait, what? So basically 2 times of hypotenuse, that is 294. So hypotenuse square, of course. So hypotenuse square is just 147. Yeah, so 147. Wait, what? No, 147. Yeah, it's 147. This is bad. ठीक है, 147. So square root of 147, that would be the hypotenuse actually, right? So वो minus ये, that will just give us this, and so it's like, yeah, it's like x square plus y square कुछ तो भी है and x plus y कुछ तो भी है, fine. If A is the area of the triangle, ठीक है, it's just doable. तो जो legs है, we'll call it x and y. So x square plus y square is just the hypotenuse square, which turns out to be 170. What? 147. And x plus y is yeah, so it's just, the good thing is कि Pythagoras जन्म तो करना उसके बार, so this is just a hypotenuse square, उसका half, sorry, उसका square root ले लेते, so square root of 147, right? Cool. And what we aim to get is half of xy, which is just half of 2xy, and 2xy is just x plus y square minus x square plus y square. Look at that, huh? Half of, yeah, so just 147 minus 147, there we go. It's just, no, wait, what? That can't be. You are saying this is 0? Like this triangle doesn't exist. That's what you're saying, huh? Yeah, that's separately just 2 times of hypotenuse squared, because इसका square hypotenuse square हो जाएगा. So just hypotenuse square is just 147, right? So hypotenuse is, oh sorry, it's not equal to, why would it be equal to the hypotenuse? This is just really bad. This should be equal to the perimeter minus hypotenuse. So ये चीज minus square root of, right? So 12 plus 8 square root 3, that's the perimeter, minus the hypotenuse, which is minus square root of 147. Wait, is this equal to that? So is, ये still same है, ये the formula, yes, but ये क्या हो जाएगा? So 147, is it something like 8 square root 3? Doesn't seem likely. 147 multiple of 3, not of 9. This is like square root of 3 into, so 12 के लिए 4 and then 27 9. Oh, so it's like 7 square root 3, yeah? Okay, so this would just be 1 square root 3. So 12 plus square root 3, that is what this thing. Wait, but this was really just 12 plus 8 square root 3, right? Not 7 square root 3. Whatever. वैसे अपन कर सकते हैं, no big deal. Half of, so ये चीज का, okay, this is bad. Right. So probably अपनी को square roots में कुछ ना कुछ मिलेगा. Let's do it. 144 plus, okay, so 144 plus, that's why. फिर minus 24 square root 3, sorry, plus है यार.
minus 147. So this is gone. It's just 12 square root 3 basically. So 12 square root 3 का square करना है अपने को. So 144 times 3, that is 432, I think. Yes. Okay. Next. Yes. 75. 75 क्या है? Let f of x be a differentiable function such that f dash of 0 is equal to 1 and this sequence an is defined as a1 is equal to 2 and an is equal to what? What is this? As a limit, huh? So x tends to infinity of x square f of an minus 1 upon. So an minus 1 probably finite quantity है. So, oh, it's like inside f. Okay, तुमने f के बारे में कुछ दिया है क्या हमें? सिर्फ एक डिफरेंशियल फंक्शन है such that f dash of 0 is equal to 1. Huh. So, okay, as x tends to infinity, this whole thing just tends to 0 as well. So basically क्या है? We can use the definition of the derivative यहाँ पे. So this will just be f of whatever this thing is, an plus 1 upon x and then minus f of 0 upon, so इनका difference, that is just an plus 1 upon x minus 0. Yeah, so right, ये पूरी चीज का स्क्वायर करना है अपने को. That would be the actual derivative. So basically this thing as x tends to 0, that would be our derivative. तो x तो अपन नीचे ला सकते हैं, अपने को an plus 1 भी लाना है. That just means like, okay, an plus 1 squared times f dash of 0 square. That is what this limit actually is. So a n is equal to an. Why is this squared? This is bad. Oh, okay, f dash of, so he, okay, nice, square like that, huh? अच्छा, sorry, n minus 1 and minus 1, जो तो n plus 1 लग रहा था. So an is equal to an minus 1 square. That's all you had to say. They really think कि अपन ये नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा दिया, but fine, complicate करने के लिए दिया हो. So n minus 1 square है an. Then from here it's very clear कि ठीक है, an is just a1 to the power of, तो जब भी तुम एक लिख जाते तुम 2 to the power of, यानी जो भी हो बड़ा, राइट. So n to 1 कितने steps लेने पड़ेंगे, कितने बार अपने को नीचे जाना पड़ेगा? n minus 1 times, right? And that's why 2 power n minus 1, I think. So for example, अगर मैं n equal to 1 put करूँ, you can clearly see which a1 equal to a1 देता है, which is correct. So yeah, that's our an, right? If product from I is equal to what's this, 1 till n of ai, so just a geometric series, is equal to 2 power k minus 1. Fine, come on, series. So a1 is just 2, really nice. 2 power n minus 1, that's what this thing is. So yeah, product of this thing, that's just 2 power of, तो start कहाँ से हो रहा है? n equal to 1 से, so 2 मतलब 1 plus 2 power 1 2 power 2 till 2 power 8 basically. That's just 2 power 9 minus 1 upon 2 minus 1. So 2 power 9 minus 1, k is 9. That's it. 65th, sorry, 75th का 9. 76th, consider the three planes. Okay, the three planes intersect in a common line. Then the shortest distance of this line from the line r is equal to negative I hat. ठीक है. So this is a line, और ये जो तीन planes है ये intersect in a common line. Oh, so there's like infinite number of solutions for these three equations, you could say, right? अगर तुम एक प्लेन को एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो इसके कंबाइंड जो तीनों है साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं तो उससे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा बेसिकली ऐसा बोल रहे हो. सो या इट्स डूएबल. सो लेट्स डू इट. 1 a and then 2 and 2 a 1 and 1 and then इसके लिए है a2 negative 2
ये क्यों हो रहा है? चार्जिंग इसकी भी नहीं हुई है, इसकी भी नहीं हुई है। ठीक है, कुछ टाइम पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ये वाला कर लेते लास्ट, उसके बाद स्टॉप करिए। सो या ये जो है दिस इज अवर मैट्रिक्स दैट वी एक्चुअली वांट, और इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। यस, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। इनफैक्ट तुम इसमें से 2 रो लो और ये लो, उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाना चाहिए। बेसिकली दैट्स ऑल यू आर सेइंग। फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करना है इसे अपने को? इसे अपने को तो बहुत सारी क्वेश्चन मिल जाएगा यार। राइट, जस्ट डील विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटरमिनेंट अपने को 0 करना है, एंड कॉपी इट डाउन 182 a1 -2 2 1 1। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। सो 1 एंड देन इट्स जस्ट 1 + 2, सो 3 माइनस a इंटू a टाइम्स 1 इज जस्ट a, एंड देन -2, और फिर क्या है +2 इंटू -2a, -2 I think. So 3 minus a square plus 2a, and then minus 4a plus, sorry, plus minus 4. So negative a square negative 2a minus 1, that should be equal to 0. So basically, wait, lucky, really lucky, क्योंकि ये perfect है. So a is equal to -1. दो वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है. So a equal to -1, that is the only thing that could possibly happen. She got it यार. तुम्हें इनफैक्ट यानी वो लाइन अब तुम ढूंढ सकते हो, बिकॉज yeah, exactly. Yeah. But still think about it. तुम्हें वो लाइन तो ढूंढनी है. Yes. How would you get ये determinant 0 हो जाएगा and everything? I just ये जो सेम 3 इक्वेशंस है, मुझे वो लाइन ढूंढने के लिए, यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली सॉल्व दिस मैट्रिक्स. आई नो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू सॉल्व दिस. मतलब क्या होगा मेरे को दो काइंड ऑफ, या लाइक दैट एसेंशियली हो जाएगा. सो इट शुड बी सॉल्व आई थिंक. Anything else that we can do to directly get the line? I don't know. Equal to -1 इसे पुट करके देखते हैं. So our matrix now just becomes 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -2 and then 2 1 1. Of course इसके कोई solutions नहीं आएंगे. We just know that because in the end पूरा cancellation ही होने वाला है. But still, let's try to figure out something. Yeah. Or we could just go with कि नहीं, एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो अपन क्लियर कर सकते हैं ना इस टाइप से, कि वो भी नहीं होगा. देखते हैं, कुछ तो हो सकता है शायद. अगर इनको कोई भी ट्रू स्टेटमेंट मिल गया, दैट्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग. यस, बट व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग? राइट, आई मीन लाइक ये दो इक्वेशंस अगर आपने दिया तो तीसरा रिडंडेंट हो जाएगा. राइट, एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग. तीसरा जो इक्वेशन है अगर वो नहीं भी कंसीडर करें, then still it actually kind of works. Oh yeah, so you could just use that fact. Oh, so तीसरा इक्वेशन जस्ट इग्नोर करो, एंड देन इन टर्म्स ऑफ z या फिर जो भी क्वांटिटी चाहिए, यू कैन जस्ट फिगर आउट. इससे तो अच्छा है कि डायरेक्ट तुम क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल के कर लो. सो तुम्हारे जो वेक्टर्स है, नॉर्मल वेक्टर्स, दो जो पहले दो है, दोस जस्ट बिकम, अपने को स्टिल एक पॉइंट तो चूज करना ही पड़ेगा जो कि इनफैक्ट लाई करता हो उस लाइन पे. राइट, वैसा फिर पॉइंट ढूंढना और वो कॉम्प्लिकेशन, इज इट इवन वर्थ इट? ये तो ये सॉल्व करने से हो गया ना बेसिकली. Still, erase this thing and we'll deal with this matrix now. एक सॉल्यूशन जो मतलब ऑब्वियस हो ऐसा कुछ.
Oh, x is equal to 1, y is equal to 1. That's it. So 1, 1, 0, this point lies on the line because 1 plus 1 is 2 and 2 minus 1 is 1. Cool. और अपने को सिर्फ क्या वो देखना है, right? So cross product. So it's just going to be what? Let's see. 1, 1, negative 1 cross. So जो plane के normal vectors थे for them. और this मैंने नॉर्मल वेक्टर ऐसे लिखे हॉरिजॉन्टली, बट फर्क क्या पड़ रहा है, और ये हो जाएगा 2 -1 and then 1, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट दैट विल जस्ट बी इक्वल टू 1 + 1 2 एंड देन इसके लिए -2 -1 सो -3 एंड देन फाइनली इसके लिए -1 -2 1 इक्वल sorry 2 minus wait for this thing it will be -2 and then -1 और इसके लिए उल्टा होगा ना यार, तो -1 -2, okay, still it's just -3, so basically -2 3 3 that would be our line vector और तो एक पॉइंट भी मिल चुका है, so you got the line fine. अब क्या करना है अपने को इस लाइन का, अपने को क्या करना है, shortest distance of this line from this line is, so this line is negative what is this, 2 plus lambda j so your point along the line is just -1 comma 2 plus lambda and then 0, so basically just -1 2 and 0 and the other things just yeah basically 0 हाँ जो ये चीज है that's just lambda 0 1 comma 0, that is the other line that we're talking about. 0 1 comma 0 you say if उसका y coordinate change हो रहा है and your x y doesn't change that much, right? So इस लाइन से तुम्हें yeah well all it's saying really is just that x is equal to 1 y is, and z is equal to 0, that's your line. Yeah, so x is equal to -1 z is equal to 0, that is that line that we're talking about. और इस लाइन का इस पर्टिकुलर लाइन से कितना डिस्टेंस है, that's what you're saying. उफ, ऐसा भी नहीं कि ये स्क्यू लाइन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है अपने को, तीन इंटरसेक्ट तो नहीं होते ऑब्वियसली, सो फाइन मे बी दीज आर लाइक स्क्यू लाइंस, हो सकता है कि ये स्क्यू लाइंस हो. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज कि अपन ये निकाल सकते ना कि ये क्रॉस ये क्या होगा, सो बहुत लंबा हो रहा है, जस्ट नो इट बट स्टिल. सो इसके लिए तो पूरा 0 हो जाएगा ये, तो ये अंदर 0 आ जाएगा एंड देन इसके लिए इट्स 3 just 3 एंड इसके लिए इट्स 2, that's that vector exactly. So उसका यूनिट वेक्टर देखो ना, इसका यूनिट वेक्टर that will be so 9 plus 4 1 upon square root of 13 then 3 0 2, and what we want is कि ये जो vector रहेगा going from this point to that point, right, which is the vector of -2 1 0, right? This vector it's a dot with this vector that will give us the distance between the two planes, yeah, the two lines, whatever. Yeah, exactly. So this dot, what was that thing, -2 1 0. Hey, but ये स्क्वायर रूट वगैरह में है, how can that make sense? This should not make sense. Wait, what? But again, just 2 and this thing is going to be 0 anyway. It was like 0 हो जाएगा. Why isn't this making any sense?
ओके अब ये बहुत लंबा हो रहा है। So apparently मैंने जो पूरा किया वो पूरा गलत हो रहा है। ओके लेट्स सी। A is equal to -1 is a solution you think so। मतलब अपने को परफेक्ट स्क्वायर मिला वही टेस्टिमोनी है कि हाँ दैट वाज करेक्ट टिल देन। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने एक पॉइंट ढूंढा जो कि इस पे इन दोनों लाइंस पे हो, राइट। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन पे। So, वो पॉइंट हमने को 1 1 0 मिला, गुड। फिर अपन ने वेक्टर ढूंढना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके। सो वी विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट वंस अगेन टू सी क्या अपन ने करेक्ट किया। सो दिस वाज 1 1 -1 क्रॉस 2 -1 एंड 1। सो 1 के लिए जस्ट 1 प्लस, ओह शिट, ओह राइट अपन ने गलत कर दिया। ओह नो, this should have been 0 यार, because thing is 1 उसका नेगेटिव, सो 0। फिर इसके लिए हो जाएगा -2 -1 जैसे -3, दैट्स करेक्ट। ओके सो 0 -3 का वो होने वाला है, राइट। एंड देन इसके लिए भी करेक्ट है, नो डाउट, इसका भी -3 आ जाएगा। दैट्स व्हाई ये सिर्फ अपने को 0 1 1 रखना था। ओके रीस्टार्ट, रीस्टार्ट क्या पॉइंट क्या था, ये था ना, राइट। सो ये चीज 0 1 1 that cross 0 1 0, now this will be correct। so yeah well इसके लिए it will just be 0 -1, so -1, that's that। and इसके लिए तो 0 हो जाएगा और इसके लिए भी 0 हो जाएगा, so just -1 0 0। so almost the same thing as 1 0 0, the same direction, whatever, the same line of action, whatever। so ये अपना vector है, okay, and then we'll find the vector going from this to this, which is just -2 1 and 0, और फिर इसका डॉट ले लो साथ में, will just be -2 plus 0 plus 0, so 2 is the distance, that's it। इसका oh divide 90 to 1 in, so yes 76 का 2। next question 70, oh अब मेरी बैटरी लो है। so that's it, I'll see you guys in the next video।